in Nagpur. That's all from my side, sir. We are all eager to just start with the session and learn from it. I would request Dr. SANKET ma'am to please welcome him with a floral salute. चालू करना आज का टॉपिक टैब्ल्यू डेटा विजुअलाइजेशन टूल है एंड वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन इट. तो मेरा ज़्यादा हैंड्स ऑन सेशन है, तो आई वुड लाइक यू गाइस टू डाउनलोड टैब्ल्यू पब्लिक सो यू कैन प्रैक्टिस. तो टैब्ल्यू पब्लिक tableau.com पे है. आप अगर क्रिएट में जाओगे तो डाउनलोड टैब्ल्यू पब्लिक ऑप्शन आपको मिलेगा. टैब्ल्यू डेस्कटॉप पब्लिकेशन. Tableau is a data visualization tool, fastest growing business intelligence tool in the market. Only competition in my terms is Microsoft's Power BI. दो ही ऑप्शन है. Tableau, I think 2 or 3 years ago, Salesforce bought Tableau, so now it is integrated with Salesforce. So it has become much more powerful than what it was before. Microsoft's Power BI, one of the biggest advantage it has for Tableau is it is integrated with other softwares already inside the computer. So that being said, Tableau doesn't lack in anything. It can connect to any database, nearly every database in the world it can connect to, and you can do some amazing stuff with Tableau. Most of the session that we will have today, you will not be using your keyboard. So most of the things will happen with just a click of a mouse. So Tableau's basically main advantage is that you do not have to use your keyboard. Most of the things are just drag and drop. So that gives you immense advantage and speed also. Our human mind thinks in terms of basically pictures. So that was the basically idea behind creating Tableau. 3 guys in Stanford University they created Tableau. So I will get into it, but first we need to download this Tableau public edition, Tableau desktop public edition. डाउनलोड टैब्लू पब्लिक का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, वो आपको एक्सेस देगा. टैब्लू डेस्कटॉप का भी एक ट्रायल वर्जन है 14 डेज का, बट प्रॉब्लम है कि वंस यू इंस्टॉल दैट 14 डेज ट्रायल ऑन एनी कंप्यूटर, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट आफ्टर 14 डेज. आप फॉर्मेट भी कर दो कंप्यूटर को, इट विल स्टिल रिकॉग्नाइज दैट कंप्यूटर. तो वो डिसएडवांटेज है. सो यू विल हैव टू थिंक बिफोर यू स्टार्ट द ट्रायल वर्जन. इट विल अलाउ यू ओनली फॉर 14 डेज विद स्पेसिफिक कंप्यूटर. One big advantage Tableau का स्टूडेंट वर्जन फ्री है. So extremely costly softwares, both of them, Tableau Public and Tableau Desktop and Microsoft Power BI. Microsoft Power BI it is free to use, but they charge case by case. So if you are asking for help for something to Microsoft, they charge it is extremely costly to ask for help. On the other hand, Tableau's disadvantage, or you can say advantage, Tableau charges per user per month. So if you are planning to use Tableau Desktop especially, so that is a creator version, so you are planning to create things. In that case, you will be charged $70 per month per user. So that is still costly. So that is around 6,000 rupees just for using Tableau Desktop. So when you build your clients, you have to think in terms of this also. So that is per user. So keep in mind, if you have 10-15 people in your team, you will be charging extremely well for Tableau Desktop. Tableau Desktop के अलग-अलग options हैं, products में, but let's first
tableau.com. You will see in products there are a lot of options. उसमें Tableau AI is a new one. So once they had integrated with Salesforce, they started this Tableau AI. And in the end, in the background, there's an Einstein engine that works in the background. So a lot of AI predictions they are done by actual Einstein engine. You have Tableau desktop. That's what I work on normally, and I think guys should also work on Tableau desktop itself. Tableau server if you are planning to connect to a server. Tableau cloud if you plan to be Salesforce actually is just a software that works on the cloud. So once they are integrated with Tableau, they have a version of Tableau that is all on cloud. So you do not need anything. You just need one browser and you are done. So that is also one option. Tableau Prep. Tableau bought this company a few years back and they use it for data cleaning, so pre-processing. So Tableau Prep is there. CRM Analytics is there for CRM. Tableau Public is open for all. It is a limited version, limited capacity version of Tableau. You can only play with a little bit of options in Tableau. I will show it to you. Data management and other things are there too. But then main softwares, Tableau Desktop, Tableau Public, and Tableau Server. So you have three options. Out of that, Tableau Desktop is the one that I have. If you have access to someone's student's ID, you can have access to Tableau for 1 year. So you get a license for 1 year for students for free. So if you know someone who can lend you his ID, you will have access to Tableau Desktop for 1 year. And it has become immensely popular in the last 7 or 8 years. Pricing calculator we can see. Tableau Creator, that is what we look for. Explorer and Viewer. You have different options. Lot of costs. If you have a team of say 10 people and who are out of that 10 say 5 are creators and then rest of them are just viewers or explorers, your billing cycle will be around $7,000 to $8,000 per year, and that is why it is not that popular also. Extremely costly. Lot of visualization tools are available in the market that are free. Python, you can customize a lot of things in Python and you can actually have pretty good visualization tools in Python itself. So you have to think before you use such tools. अगर आपकी बड़ी कंपनी है, so it becomes very easy to use. अगर आपका स्पेशली एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, तो this is extremely costly. So in that terms, you have to start thinking in terms of Power BI. You can charge case by case basis. It becomes easy to handle things. What is Tableau? Visual Analytics platform, transforming the way we use data and solve problems. Fastest growing, I think number 1 or number 2 in the world right now. And it helps organizations in becoming more data driven. Basically, people are more inclined towards pictures. And so these three guys, they are the co-founders or founders. They started Tableau in Stanford, and main aim was to bring science to arts people. So their main aim was to have science and arts, combination of science and arts. So all we are still here and they are working towards the same. Actually, arts के तरफ ज़्यादा focus है. So that's why it is all visually appealing stuff. So little bit of what we will be doing. एक hands-on session रहेगा छोटा, then some additional resources. Start times will discuss. बीच में थोड़ा के course and data vision helps to bridge the gap between numbers and words. So you will see how. What is Tableau? Tableau is a visual analytics platform transforming the way we use data, and it helps in solving complex problems without the need of a lot of customization tools. So in terms of Python or R, you do not need it. It helps organizations in becoming more data driven. It has disrupted the business intelligence field since the time of its incumbents in 2007, I think. 2007 में actually in a public में आया Tableau, and from that time onwards
they are just dominating the space of business intelligence. Only Microsoft Power BI is its competition, no one else. So only two people are there who are basically helping in terms of. So question again, why Tableau? Tableau platform is known for taking any kind of data from anywhere. So you have access to any kind of database. You have access to literally any data that is stored anywhere in the world. You can have access to Tableau and it will work with it. So advantage plus no memory limits. There are no memory limits when you are using Tableau. You are limited by your only computer. The computer that you are going to use, that is the only limit you have. There is no other limit for using Tableau. So one of the biggest advantages. Why Tableau? Simple as dragging and dropping. I will not be touching my keyboard for most of the presentation. Rarely I will touch my keyboard. Most of the times I will just use mouse. So one of the biggest advantages. Apart from that, the last point, biggest community in terms of business intelligence. A lot of people are online, more than 1 million people are subscribed to Tableau Desktop and Tableau Public, and a huge community to help also. During the, if you go to Tableau Public, you will see a lot of dashboards that are created for COVID, and at that time you could see the power of Tableau. A lot of people were coming together and they were working together for COVID related cases. So extremely good charts that are drawn for COVID are there. So community is extremely strong. So this is one of the Gartner's quadrant. There is a company which basically gives you in terms of basically this is a graph in terms of vision of completeness of vision and ability to execute. And there are only two players there. One the rightmost corner top Microsoft is there, and then there is Salesforce. So Salesforce being integrated with Tableau, that is number two. All others are niche players. They play with specific things only. Some are for finance, some are for medical fields. SAP is there, Oracle is there, a lot of other players are there. But only two people are leading. And this is by Gartner. They come up with this survey every year. And at the end of 2023, this is going on since last 7 years that I know of. They are the only players who are leading this space. So Gartner's Magic Quadrant, that's what we call it. So data science pipeline, data visualization comes in the end. So we are thinking in terms of data science projects or machine learning projects or basically any analytics projects. Visualization comes in the end. So Tableau's main work starts once you have figured out what you need to do with your data. So design process is not involved, but then you need to communicate and have basically good ability to convert your machine learning or data science projects into visualizations. Big questions, what questions are you trying to answer for, and depending on that, you will have your chart types. A lot of charts are involved. So we are going to visualize, so you will see a lot of charts. Did everyone get access to Tableau Public? Chance मिला? Tableau Public download करने का हुआ क्या try? Install करेंगे ना पण Install करायची ऍडमिन कडे असते स्नेहल म्हणून ऍक्सेस आहे नाही आम्ही डाउनलोड केलं ते एक्झिक्यूट नाही एकदा स्कॅन मारून पण ठीक आहे मी माझं तरी दाखवतो ऍटलीस्ट हां माझं दाखवतो आपलं मेल द्यायला Tableau Desktop, that is what we are planning to work on. It's simple software. This is what the 15 days, 14 days trial option आपल्याला आहे. But once you exhaust that trial, no option to come back again. So you will need a key to have access to Tableau Desktop. And it is costly. I mean, there is no doubt about it. It is extremely costly. Direct Tableau Desktop पर जाता हूँ. मेरे कंप्यूटर पर दिखा देता.
So you have two options, tableau public and tableau desktop. दोनों अलग-अलग खेलते हैं. tableau public मेरे इधर में. So this is how tableau public version will look like. Nothing fancy. Just the options are there. So you will have options to play with Excel and text file. That is its limit. थोड़े से और options हैं, but you will rarely use them. But you have access to Excel, so that is one of the biggest advantage. Text files also, so comma separated values, you will have access to that also. तो उसी पे आप maximum चीजें जो मैं आज दिखाने वाला हूँ actually सिखाने नहीं वाला, पर जो दिखाने वाला हूँ वो टीचर कभी भी बाहर आया टीचर चली रही क्लासरूम भी चल रहा है, तो मैक्सिमम चीजें इस पे भी कर सकते हैं. जो मैं दिखाने वाला हूँ वो आप इस पे भी ट्राई कर सकते हैं, घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. जो डेटा सेट्स मैंने लिए हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है, so no problems in accessing any data sets. Tableau desktop comes with a data set by default. Sample superstore नाम है, यूएस और कनाडा का डेटा सेट्स है, और वहाँ का अमेज़न समझ लीजिए, उसका एक डेटा सेट का अपने को एक सैंपल दिया गया है, एंड दैट इज व्हाट वी विल वर्क ऑन. मोस्ट ऑफ आवर एग्जांपल्स आर फ्रॉम देयर. तो Tableau desktop ऐसा एकदम सिंपल है, पब्लिक वर्जन है, and nearly the same thing but with a few more capacities. परमिशन्स लागते. नाही पण त्याचं म्हटलं आहे मुंबईवाल्यांचं की आम्ही सगळं पाठवून टाकले असं एवढंच नाही या लक्षात व्हायला पाहिजे म्हणताय ते. ठीक है ना, ज्यादातर ठीक है तो दाखवतो डाउनलोड केलं ना. इंस्टॉल आहे का आधीचं? नाही इन्स्टॉल तर नाही केलं ना. So Tableau desktop will look like आम्ही this. बघूनच Depending on what you are playing with, each के जो files है वो बढ़ते रहेंगे, change होते रहेंगे. Left में आपको options है to access different databases, and out of that to a server के ऊपर जो लिखा है to a file, that is what we will play for static databases. अगर आपका dynamic है, server से connected हो, Google Sheet से connected हो, या Finance से connected हो, आप stock market का analysis कर सकते हैं. Oracle Cloud Services, Google Cloud Services, Microsoft Azure, anything you can think of, it will be there. So more to a server में जो option है, if you connect to it, you can connect to most of the databases. जो चाहिए वो option आपको मिलता है. Other than this, if there are any other databases that you have, you also have ODBC and JDBC connections. So Java related databases and Oracle related databases. You can connect to both of them. So there is no limit to connecting to any database. आपको कोई option नहीं. You are limited by your physical computer's memory. That's it. Tableau doesn't have any problem in handling the data. वो tension ही नहीं. अच्छा है. Important point. Tableau के certifications हैं. We can give a lot of certifications. सबसे easy जो certification है Tableau analyst है, और उसके ऊपर एक है Tableau desktop. So Tableau desktop पे मैं काम करता हूँ. Tableau desktop का fees जो है वो $100, and you can get certified to pass that exam. You can और ऐसा भी exam नहीं है कि you are free for every 3 years. Once you pass it, you are certified for life. तो एक ही बार exam देना है. Tableau desktop नाम है, वो website पे ही उसका पूरा डिटेल है. So Tableau desktop का जो exam का content है वो to a server से ऊपर का है. So you don't have to worry about the server. और students का भी एक option है. You can basically actually encourage our students to take active participation in this. उनके लिए 20% का डिस्काउंट एग्जाम से, if they are students, if they can show ID, they will have 20% plus tax, वो GST as well 18% है. So $118 अपने लिए आएगा और around $90 students के लिए आएगा. But one of the best things, maximum बाहर भी सीखा था, तो maximum students को मेरे compulsory है to learn Tableau. So one of the best things to learn. और काफी Fortune 500 में से 400 कंपनीज तो बैठी है. They are using RBI यूज कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया यूज कर रहा है, वेराइजन यूज कर रहा है, आइडिया यूज कर रहा है, lot of people are using it. ये गवर्नमेंट के HDFC बैंक के उसको यूज कर रहा है. बहुत बड़े लोग यूज कर रहे हैं. We can also use it. उसमें का so Tableau में actually visualization tool है, so you can do one thing in multiple ways.
बहुत सारे ऑप्शंस हर जगह पे छुपे हुए हैं एंड यू कैन डू द सेम थिंग इन मल्टीपल वेज। सिंपल डेटा सेट ओपन करना है तो यहीं पे आपको एक्सेल शीट का भी ऑप्शन दे रहा है, यहीं पे डेटा का भी ऑप्शन है, न्यू डेटाबेस का ऑप्शन है, और डायनामिक है तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जो आपके जो मेन्यूज है दे विल कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन व्हाट कंटेंट इज देयर, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू। स्पेशली आपको थोड़ा देर लिखा था इट विल चेंज इट्स ऑप्शंस, वो स्मार्ट इनफ है फिगर आउट करने के लिए कि आप क्या कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। हम लोग एक्सेल और टेक्स्ट फाइल दोनों से खेल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक सैंपल सुपरस्टोर नाम का एक एक्सेल शीट उन्होंने दिया है। So whatever Tableau does, it stores in your computer my documents, my Tableau repository नाम का एक folder बनाया है उसने, and everything is stored there. So pretty simple to operate. My Tableau repository में data sources नाम का folder है, and then there are different versions. Which version you are on right now? Every time you download in a update आया, so it downloads the whole thing and it creates this folder, and then you work on that folder itself. So next time you can archive it or you can leave it like that. तो आपका options available है. तो सैंपल सुपरस्टोर नाम का एक डेटाबेस है जिससे हमने कनेक्ट किया है, एंड उसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। माय Tableau रिपोजिटरी डेटा सोर्सेस, सो दिस इज इट। ये थोड़ा चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द वर्जन। सो नए वर्जन में कनाडा का डेटाबेस उन्होंने इंक्लूड किया है, मैं जिस पे ऑपरेट कर रहा हूँ उस पे कनाडा नहीं है, सिर्फ यूएस का डेटा है। सो इन माय वर्जन देयर आर 10194 रोज एंड 21 कॉलम्स। अभी थोड़े से एडिशनल रोज या कॉलम्स बढ़ गए होंगे, कॉलम्स नहीं होंगे, रोज ही बढ़ गए होंगे। कंट्री का एक ऑप्शन कॉलम खुला हुआ है तो वो भी है, तो कॉलम्स नहीं रहेंगे, सिर्फ रोज बढ़ गए हैं। सो 10194 रोज है और 21 कॉलम्स आपको खेलने के लिए मिल रहा है। सिंपल डेटाबेस है, रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड सो ऑन। पूरा डेटाबेस यूएस का ही है। ये शायद इसमें कनाडा का इंक्लूड हो सकता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका ही बोल सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका का पूरा डेटाबेस है except the last four columns: sales, quantity, discount and profit. Everything else is qualitative. So these four columns are only numbers. बाकी पूरा वो numbers के बारे में कुछ भी information है, so वो अपने को ध्यान देना पड़ता है। So what Tableau does actually whenever it sees the database, वो दो चीजें करता है। First it figures out what type of data it is, तो वो देख रहा है कि नंबर है कि नॉन नंबर है, क्वालिटेटिव डेटा है क्वांटिटेटिव है, और दूसरा अगर वो स्पेसिफिक कोई डेटा टाइप है, हमारे पास पाइथन में इंटीजर, फ्लोट, बूलियन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लिस्ट कोड लिस्ट बहुत सारा होता है, वहाँ यहाँ पे भी ऑप्शंस है। यहाँ पे हमको स्ट्रिंग है, बूलियन है, इंट में नंबर्स के ऑप्शन है, डेट एंड टाइम है, तो वी हैव डेटा टाइप्स आल्सो। दैट बेसिकली डज टू थिंग्स, वन इट फिगर्स आउट नंबर्स है कि नहीं है, एंड देन इट फिगर्स आउट कौन सा डेटा है, सो स्पेसिफिक डेटा टाइप ढूंढ लेता है। तो यही डेटाबेस को मैंने कनेक्ट किया है टैबलो डेस्कटॉप में। So only four: sales, quantity, discount and profit are numbers. Everything else is related to those numbers. तीन शीट्स है, वर्कशीट्स। पहला ऑर्डर्स है, सेकंड पीपल है, जिसमें we are discussing about regions. So they are divided US into 4 regions and they have regional managers for those regions. वो भी देख लेते हैं, और सिंपल डेटाबेस टेक्निक है। चार रीजन है, चार रीजनल मैनेजर भी है, एंड लास्ट शीट इज रिटर्न्स, एंड इसमें दो ही कॉलम, आइदर यू हैव बेसिकली यू रिटर्न द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा था वो आपने रिटर्न किया इसलिए उसको यस मार्क है, एंड देन ऑर्डर आईडी, सो जो ऑर्डर आईडी था प्रोडक्ट का वो रिटर्न कॉलम में। सो ओनली टू कॉलम्स है इसमें आपके पास। सो टोटल शीट्स 3: ऑर्डर्स, पीपल्स एंड रिटर्न्स। उसमें से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स सिर्फ ऑर्डर्स टेबल में खेलेंगे। ऑर्डर्स में भी ऑर्डर आईडी है, so we can match order ID with the next sheet and figure out which product was returned. तो उतना बस कर सकते हैं। So मैंने उसी टेबल को कनेक्ट किया है, तो when once you come to Tableau you have to call it a table. वहाँ पे वो वर्कशीट था या वर्कबुक था एक्सेल का, यहाँ पे you are dealing with tables। तो लेफ्ट साइड में आपके पास ऑर्डर्स, पीपल और रिटर्न तीन टेबल्स हैं, और वो तीन टेबल्स से आप खेलने वाले हैं। तो तीन शीट्स थे आपके पास, वो भी तीन टेबल्स हो गए। So you are playing with orders table. That was the most important table there. So all you have to do is drag
orders table और double click and you will have your data here. आपका डेटा पूरा वो कनेक्ट कर लेते हैं. So Tableau connects with the database और उसने कनेक्ट करके अभी दो पार्ट में डिवाइड किया. मैंने बोला था कि it has divided the database into two parts. और उसमें से वो लेफ्ट साइड का जो ऑप्शन है यहाँ पे जो है वो एक्चुअली दिखा रहा है कि कौन से टेबल से आप कनेक्टेड हो और उसका नाम वो टेबल में क्या है और उसने क्या चूज किया. समटाइम्स कॉलम सेटिंग आपके नेम ऑफ द स्टूडेंट रहेगा तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर द स्टूडेंट ऐसा रहता है. अंडरस्कोर रहा Tableau फिगर्स आउट कि भैया अंडरस्कोर यूज कर रहा है या स्पेस यूज कर रहा है एंड इट मेक्स अ मीनिंगफुल नेम आउट ऑफ इट. तो उसका एक्चुअल में Tableau पे अलग रहेगा तो यहाँ पे आपको अलग दिखेगा और एक्चुअल फिजिकल टेबल यानी आपका जो कनेक्शन है मेन वो अलग रहेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ये एक्सेल शीट यहाँ पे जो दिख रहा है हमने सिर्फ उससे कनेक्शन किया है. वी कैन नॉट चेंज दैट एक्सेल शीट. You do not have power to go back into the database and change it. वो access आपके पास है नहीं. So there is no chance that you can go and change that Excel sheet. एक temporary Excel sheet Tableau में बना के रखी है ऐसा समझ के चलते हैं और उसमें वो सारा काम हम कर रहे हैं. तो you will not by there is no chance, zero chance है कि आप कोई भी database को छेड़ सको. इससे कुछ भी नहीं कर सकते. तो आपके पास Excel sheet का ऑप्शन है हमने कनेक्ट किया है. So these are all the 21 columns. पूरे 21 फील्ड्स बोलते हैं. 10,194 रोज है तो मेरा डेटाबेस अभी यूज करिए. When you if you download it, most probably Canada का ऑप्शन आपके साथ आएगा नया डेटा नया वर्जन जो है. So we'll have few more rows in the database. तो row ID first, order ID, order date, ship date, ship mode and so on. कुछ डेटा ज्योग्राफिक है जैसे कंट्री, रीजन, सिटी. बाकी सारा क्वालिटेटिव है. पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी. There are three main categories in this database. तीन ही categories है. हम तीन main categories और 17 sub categories. So we are going to deal with 17 sub categories. और उसमें से भी main जैसे मैंने बोला last four columns are important. Sales, quantity, profit और discount. They are the only four columns that have numbers in them. तो उतने ही columns important. जब मैंने बोला था कि Tableau figures out कौन से numbers है कौन से नहीं है and it also assigns a data type. तो जो असाइन तो डेटा टाइप का जो ऑप्शन है वो एकदम छोटा है. मेरा एरो दिखाया होता नहीं वहाँ पे एक हैश मार्क. एक्चुअली पूरा विजुअल टूल है तो आपको सिर्फ देख के ही पता चलेगा कि क्या चल रहा है. यू डू नॉट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो देख के अगर हैश मार्क है तो इट टेल्स यू दैट इट इज अ नंबर. तो ये चार कॉलम्स में छोटे जो मार्क्स है देयर ऑल हैश मार्क्स. यहाँ आपके कंप्यूटर पे दिखेगा. तो बाजू में एबीसी लिखा है बाकी ये सारे लगभग एबीसी है. सो दे आर बेसिकली स्ट्रिंग्स. डेटा टाइप उसने आइडेंटिफाई किया है स्ट्रिंग्स. पोस्टल कोड, स्टेट, सिटी, कंट्री इतने सारे उसने एक ज्योग्राफिकल एंटिटी की तरह ट्रीट किया है. गोल है. सो इट इज टेलिंग यू दैट इट इज अ ज्योग्राफिकल डेटा टाइप. शिप डेट और ऑर्डर डेट दे आर टू डेट्स इन योर डेटा टाइप और उसमें उसने कैलेंडर का आइकॉन मार्क करके रखा है. सो दैट टेल्स यू दैट इट इज अ डेट टाइप. इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट अगेन जब आप एक्सेस करोगे डेटा सेट को मेरा पहला रो आईडी के पहले पहला रोल नंबर 1 रो आईडी बेसिकली रोल नंबर 1 नहीं रो आईडी नंबर 1 जो यहाँ पे 1111 लिखा है. तो मैंने फिजिकली जाके वो एक्सेस शीट को चेंज किया था इसलिए 111 लिखा है. पॉइंट क्या है कि वो हैश मार्क लिखा है रो आईडी के ऊपर यानी रोल नंबर के ऊपर हैश मार्क है. सो इज दैट एक्चुअली अ नंबर दैट वी हैव टू फिगर आउट. रोल नंबर इज इट एक्चुअली अ नंबर. फर्स्ट थिंग आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा टैबल्यू ने जो डेटा टाइप आइडेंटिफाई किया है इज इट राइट और नॉट. क्योंकि उसने तो आइडेंटिफाई कर लिया पर अपना बराबर है कि नहीं देखना पड़ेगा. तो रोल नंबर इज इट एक्चुअली अ नंबर वो अपने को सोचना पड़ेगा. कैन वी ऐड रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 2 एंड मेक रोल नंबर 3? वो पॉसिबल नहीं है. सो इट इज नॉट अ नंबर इट इज अ स्ट्रिंग. तो आपका पहला काम है जब भी आप डेटा सेट से खेलोगे या डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो फर्स्ट फिगर आउट कि आपका डेटा टाइप कौन सा है. और आपका टैबल्यू बता रहा है कि मैंने हैश मार्क लगा के रखा है दैट मींस इट हैज आइडेंटिफाइड इट एज अ नंबर और वो गलत है. सो यू हैव टू चेंज इट. यू हैव टू चेंज द डेटा टाइप. अभी चेंज करने का भी ज्यादा टेंशन है नहीं. जो मार्क जो है उस पे क्लिक करेंगे तो बाकी के डेटा टाइप दिखा देगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज चूज कौन सा डेटा टाइप आपको चाहिए एंड इन दिस केस वी नीड स्ट्रिंग. रोल नंबर 1 2 3 4 you cannot add numbers roll number 1 to roll number 2. So that is a string, that is not a number. So simply है I converted into a string. और string को कनेक्ट किया. अभी मैंने जैसे बोला देख के समझ में आना चाहिए. string है तो लेफ्ट अलाइन है. नहीं ना वो मुझे आदत है इसलिए मुझे मालूम है. लेफ्ट अलाइन है. सारे नाम अपने अगर एक्सेल शीट में देखोगे तो नाम नेम लिखा हुआ तो दे आर ऑल लेफ्ट अलाइन. नंबर्स आर राइट अलाइन. कोई आप सेल में जाओगे इंडिविजुअली
the numbers are always right aligned unless we force them. वो जनरली राइट अलाइन रहते हैं. यहाँ पे भी वैसे ही है. यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग किया कन्वर्ट तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट अलाइन. तो अभी आप बता सकते हो कि वो स्ट्रिंग है कि नहीं. सो यू कैन टेल व्हाइल लुकिंग एट थिंग्स व्हाट टाइप ऑफ डेटा इट हैज. सो बेसिक डेटा टाइप्स इतनी है. The exam that I talked about, TABLEAU desktop, it is divided into 4 parts. पहला part ये page. 25% of the exam is based on this page only. And इतना easy नहीं है जितना दिख रहा है. यहाँ पे मैंने अभी एक ही डेटा सेट से कनेक्ट किया है और एक ही टेबल से कनेक्ट किया है. You can connect to 32 different types of data. Yeah, there are types of data tables actually. So 32 different बोला तो list लंबी होने वाली है. And then you will have to integrate one with another. तो SQL के joins जो रहते हैं वो पिक्चर में आते हैं. तो इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन सब पिक्चर में आएंगे और वो कॉम्प्लेक्स करते हैं चीजों को. सो ऑल दैट विल हैपन हियर ऑन दिस पेज ओनली. बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट, एक्चुअली काम करने के पहले यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट डेटा कौन सा चाहिए और कितना चाहिए. तो मुझे हर बार इतना डेटा लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. मे बी आई वांट ओनली 1 or 2 columns, so I can adjust or filter the data right now only. So 25% of your exam will be based on this one page only. डेटा कनेक्शंस करने कैसे हैं यही आपका मेन पॉइंट है. इसमें हमने कनेक्ट तो कर लिया, डेटा टाइप भी आइडेंटिफाई कर लिया, डेटा नंबर्स है कि नहीं वो भी देख लिया, नंबर ऑफ रोज भी पता चल गए, कॉलम्स भी पता चल गए. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो कनेक्टेड है ऑर्डर सैंपल सुपरस्टोर इसी का सब खुला है. एंड दिस इज वेयर इट विल टेल यू हाउ यू कैन कनेक्ट टू डिफरेंट डेटाबेसेस डिफरेंट टेबल्स के साथ. मैं ऑर्डर्स टेबल के साथ ही कनेक्टेड हूं. मैंने आपको शीट दिखाया था, उसमें रिटर्न्स नाम का एक शीट था जिसमें रिटर्न से हम कनेक्ट कर सकते थे. रिटर्न कौन से आइटम्स है वो दिखाई दे रहे थे. सो आई कैन जस्ट डबल क्लिक दिस टेबल. डबल क्लिक किया तो एक्चुअली दिख रहा नहीं लेकिन एक क्रॉस मार्क है, एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स ओपन हुआ है. एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू जॉइन. तो मैं वो दूसरा जो शीट है रिटर्न्स वाला, आई कैन ड्रैग एंड जस्ट ड्रॉप हियर. सो वंस आई ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, इनर जॉइन बन गया. वो मार्क इनर जॉइन का ही है. छोटा सा दो कलर्स दो सर्कल्स है, उसके अंदर एक छोटा सा मार्क है. यू कैन चेंज इट. आपको चेंज करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक देयर. आपको बाकी के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं. और किस चीज पे ज्वाइन किया है वो बता रहा है. ऑर्डर आईडी के भरोसे पे खेला है बिकॉज़ दूसरी शीट में ओनली ऑर्डर आईडी ही है. दूसरा तो कॉलम सिर्फ यस ही था. तो ये शीट का फर्स्ट शीट का ऑर्डर आईडी और सेकंड शीट का ऑर्डर आईडी उसने कॉमन पकड़ा है, तो उसके भरोसे पे उसने इनर जॉइन किया है. तो नंबर ऑफ रोज डिक्लेयर कम हो गए. 10194 से काफी रोज कम हो गए. 800 रहने चाहिए क्योंकि रिटर्न प्रोडक्ट्स 800, बट ऑर्डर आईडीज यानी एक ही ऑर्डर पे मल्टीपल आइटम्स भी आ सकते हैं, है ना. मैंने टीवी भी बुला लिया, वीसीआर भी बुला लिया, कार भी बुला ली. एक ही ऑर्डर पे 3 अलग-अलग चीजें आ रहे हैं, तो इसलिए वो मल्टीपल रोज का ऑप्शन आपके पास रहने वाला है. तो एक ही ऑर्डर आईडी पे मल्टीपल रोज के आइटम्स रहने वाले. तो फील्ड्स 21 रहेंगे. नंबर ऑफ कॉलम्स या एलिमेंट्स आपके या सैंपल्स वो आपके चेंज होते रहेंगे. तो इनर जॉइन का कांसेप्ट यानी दिखाने के लिए ऐसे ही सिंपल इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर, आप ऐसे ही खेल सकते हो. सिंपल ही है. तो वो बाद में निकालने का है. अगेन यू कैन रिमूव, डन, क्लोज द क्रॉस मार्क्स, डन. यहाँ से ऑर्डर्स टेबल को भी निकालना है. आई कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन द लेफ्ट एंड डन. ब्लैंक शीट अगेन, कोई टेंशन नहीं है. सो इफ आई वांट टू कनेक्ट अगेन डबल क्लिक, इट विल बी देयर. So basics done, databases done, filters. So before you go to the next page, you will have to identify what यानी कितना पोर्शन डेटा का आपको जरूरत है, तो उतना ही रखना पड़ेगा. ये एक्सट्रीमली कॉस्टली सॉफ्टवेयर है. आप अगर इसको Amazon क्लाउड सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजर सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करोगे और एक्सट्रीमली कॉस्टली हो जाएगा. बिकॉज वैसे ही सर्वर से होके बाकी क्लाउड सर्विसेज से कनेक्ट करोगे उसका कॉस्ट भी ऐड होगा. So it will become extremely costly. Problem यहाँ पे 10,194 rows अभी है और 21 columns. Refresh करने के लिए आपको cell by cell. You can go through all the rows and all the columns. अगर 1 million rows है, yes है. हमने डाउनलोड किया. एक चीज मैंने सिर्फ वो पहला रो 111 है. चीज ये abstract. सिर्फ एक चीज चेंज की है. अगर 1 million rows और 1 million columns है और वो आपका डेटा सेट आपके पास कैजुअल प्लेटफॉर्म पर बैठा है, तो वो रिफ्रेश मारने के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर को नीचे चलेगा और उसका स्पेसिफिक अपने चार्ज होता है.
वो आपने रिफ्रेश किया उसको देखना होगा, उसको तो लगा आपने एक्सेस किया है किसी ने, तो इट इज गोइंग टू चार्ज फॉर एक्सट्रीमली कॉस्टली सर्विस। उसको चेक करना पड़ता है कि आपने क्या किया, सही यूज करना होगा। एक रिफ्रेश एक्सट्रीमली कॉस्टली है, तो जब आप क्लाइंट्स से बिल करोगे तो यू हैव टू थिंक फॉर योर कॉस्ट। तो स्टॉक मार्केट का अगर प्रोजेक्ट है एक्सट्रीमली कॉस्टली प्रोजेक्ट, लगता है इजी है कि अरे एक ही स्टॉक खरीदना है, एक ही बाय और एक ही सेल करना है, यहाँ जो रिफ्रेश आता है वो प्लान कर रहा है, एक रिक्वेस्ट करो तो कितना चार्ज करना, मतलब मैं बता रहा हूं मैं नहीं चार्ज कर रहा, सॉफ्टवेयर ही चार्ज कर रहा है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चार्ज नहीं कर रहा हूं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर एक चीज का कॉस्ट, बिलिंग आवर्स, बहुत काम इजी हो जाएगा। एक्सेल शीट पे जितने लोग बैठे हैं उनके सारे जॉब चल जाएंगे, लगभग सारे जॉब चल जाएंगे, एक ही सॉफ्टवेयर पूरा एक्सेल शीट का डिपार्टमेंट खाली कर देगा, एंड दैट इज इट्स प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें हैं, आपको दिखेंगे बाद में दिखाऊंगा कि take care of most of the things that normal है, seconds में हो जाएगा, seconds भी नहीं लगता, उतना भी टाइम नहीं लगता, एक drag drop done, print खत्म, and problem solved। और वो ही चीज पाइथन में करोगे, आर में करोगे, जावा में करोगे, सी में करोगे, घंटे लग जाएंगे, तो वो उसका एडवांटेज है। So it is going to take basically reduces the number of man hours, तो वही है अपना selling point, unique selling point, you are going to reduce your man hours by using this software, और उसका चार्ज भी लेता है और अमेजिंग चार्ज भी बढ़ा है। फिल्टर्स राइट साइड में टॉप में एक्सट्रैक्ट और लाइव है। इफ यू आर प्लानिंग टू कनेक्ट टू लाइव डेटा, एक्चुअली वी आर कनेक्टेड टू लाइव डेटा, सो ऑप्शन एक टॉगल का स्विच है छोटा सा, लाइव वर्सेस एक्सट्रैक्ट का, बाय डिफॉल्ट वो लाइव ही रहता है, सो यू आर कनेक्टेड टू लाइव डेटा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है टू शिफ्ट टू एक्सट्रैक्ट। सो अगर जैसे मैंने बोला स्टॉक मार्केट का पीछे का डेटाबेस अगर चेंज हो रहा है 950 टू 315 कुछ तो भी चेंज 330, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, तो यहाँ पर रिफ्रेश होते रहेगा, पर वो कॉस्ट कर रहा है, वो ध्यान में रखना है, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश करते रहेगा। वी कैन टेल कितने मिनट्स बाद कितने सेकंड्स बाद आपको रिफ्रेश करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आई डोंट वांट इतना बड़ा डेटा सेट मुझे हैंडल करने की जरूरत नहीं है, प्लस स्टॉक मार्केट में मुझे एनालिसिस करना है, आई नीड एटलीस्ट वन फिगर टू प्ले विद। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक लेके बैठा हूँ, वो 4000 पे चल रहा है, नेक्स्ट सेकंड पे वो 10,000 पे चला गया, विच फिगर शुड आई चूज? दो में से एक कोई तो चूज करना पड़ेगा ना मेरे एनालिसिस के लिए, टू फिगर आउट इफ आई शुड बाय और नॉट। मैंने बाय किया 4000 का, बाय द टाइम आई पुश द बाय बटन वो 10,000 पे चले गए, प्रॉब्लम हो गया है ना। तो वो यू विल हैव टू हैव एटलीस्ट वन इंस्टेंस, एक नंबर का, ये पूरा डेटा सेट का आपका एक इंस्टेंस रहना पड़ेगा और उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। प्लस टैबलू विल इवेंचुअली स्लो डाउन, मशीन का कैपेसिटी स्लो डाउन है, अगर मिलियन रोज सही में है यू विल सी द डिफरेंस। एक छोटा सा ग्राफ बनाने के लिए भी वो टैबलू स्लो डाउन कर देगा, और वो रिफ्रेश करते करते ग्राफ बनाने के लिए जब स्लो होगा यू कैन टेल कि मेरा डेटा सेट उसकी कैपेसिटी के बाहर चला गया। सो एट दैट टाइम यू कैन मूव टू एक्सट्रैक्ट, चूज द डेटा यू वांट, बस उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ओनली कॉलम्स, ओनली रोज, ओनली द रोज एंड कॉलम्स दैट यू वांट, चूज देम एंड वर्क विद इट, उसको ही रिफ्रेश करने दो, बाकी किसी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। तो लिमिटेड कैपेसिटी में खेलने का एडवांटेज एक्सट्रैक्ट में आपको मिलता है। प्लस एक इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कल लाइट जाने वाले हैं मुझे मालूम है, एंड आई हैव टू शो दिस प्रेजेंटेशन टू माय बॉस, एंड देयर इज नो लाइव डेटा, मैं कनेक्ट कैसे करूं लाइव डेटा से एट दैट टाइम? सो आई विल हैव टू वर्क ऑन एन एक्सट्रैक्ट टुडे। एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए मुझे नंबर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, so I will have to work on something today, तो एक एक्सट्रैक्ट कॉपी मुझे आज बना के रखनी पड़ेगी, so I can show it to my boss tomorrow जब लाइव आएगी। तो वहाँ पे मुझे लाइव ऑप्शन का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए लाइव जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट खेलना पड़ेगा, तो वो इंडिया के लिए काफी यूजफुल है। वैसे इन्वर्टर्स काफी रहता है आजकल, पर फिर भी सेकंड्स का भी बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, तो एक्सट्रैक्ट विल हेल्प यू इन दैट। तो सिंपल ही है, एक्सट्रैक्ट करना कुछ भी नहीं है, टॉगल स्विच ही है, ऑल यू डू इज क्लिक एक्सट्रैक्ट एंड दैट्स इट। वो एक बार रिफ्रेश करेगा, उसे रिफ्रेश करके रख लिया है, एंड यू आर प्लानिंग टू एक्सट्रैक्ट नाउ, प्लानिंग ही है, अब तक किया नहीं है। So this is one type of filter that you have 6 main filters है या 7 main filters है depending on the version you are working। अलग-अलग वर्जन है टैबलू के, कुछ में 6 कुछ में 7। So one of the biggest, the topmost filters is extract, all you do is extract data and then you work with it। उसके बाजू में ही और एक फिल्टर है, मेन फिल्टर है, डेटा फिल्टर बोलते हैं उसको। You are what extract does same thing it also does, और तो एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, तो उसमें कैपेसिटी भी थोड़ी ज्यादा है। So let's go back to live. Live जाना है वापस, तो all you do is switch
it will refresh itself. It will by default refresh itself. तो जो आपने डेटाबेस चूज किया था, एक्सट्रैक्ट जब मैं बोलता हूँ तो एक कॉपी उसने बनाया है और उसने उसके ऊपर काम करना चालू किया है. जैसे ही मैंने लाइव बटन दबाया, इट विल रिफ्रेश इटसेल्फ एंड मूव टू द करंट डेटा, जो करंट डेटा है उसका. तो आपका जो आपने अगर कुछ कैलकुलेशंस किए, कुछ ग्राफ्स बनाए, दे विल आल्सो बी रिफ्रेश, ऑटोमेटिक रिफ्रेश होके नया ग्राफ बन के आएगा. तो वो एडवांटेज है. कैन यू ऐड कॉलम्स टू योर एक्सेल ग्राफ? एक बार समझो आपने एक्स और वाई का ग्राफ बना दिया, तो कॉलम ही रहता है एक्स और वाई का. अगर आप एक्सेल में खेल रहे हो तो रिफ्रेश करते टाइम समझो एक कॉलम और ऐड हो गया, कोई तो भी नया डेटाबेस में और एक नया इनपुट आ गया. कैन यू ऐड इट? नहीं कर सकते. यू हैव टू चेंज द होल ग्राफ. आपको नया ग्राफ बनाना पड़ता है. यहाँ वैसा ऑप्शन है, एक बार रिफ्रेश किया, नया कॉलम भी ऐड होके आ जाएगा. तो एडवांटेज है टैब्लू. वो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, बट दे आर एक्चुअली यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ओनली. वो आपको पूरा काम जो पहले आपने ग्राफ बनाया था वो फिर से करने की जरूरत नहीं है. एक्सेल विल आस्क यू टू डू इट अगेन बिकॉज़ आप नया कॉलम ही ऐड करने का प्लान कर रहे हो. टैब्लू कैन डू इट इजीली, उसको प्रॉब्लम नहीं. तो एडवांटेज. तो फिल्टर्स, ऐड फिल्टर बोलेंगे. अगेन एक ऑप्शन. इंटरेस्टिंग स्टोरी. मेरा एक स्टूडेंट है जिसका इंटरव्यू हुआ. एक लेडी ने इंटरव्यू लिया, 60 इयर्स ओल्ड. वीडियो कॉल, कोविड का इंटरव्यू था तो फोन का इंटरव्यू. तो सामने वाले लेडी ने इंटरव्यू जब लिया, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस, दोनों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर के एक्सेस नहीं है और टैबलेट का इंटरव्यू. तो उसने बटन बोला, ये जो ऐड फिल्टर का ऑप्शन है, ये बटन दबाएगा तो क्या होगा? इतना ही पूछा. ये एक ही क्वेश्चन था, ये बटन दबाएगा तो क्या होगा पता? उसने बोला ऐड कर सकते हैं हम डेटाबेस को. नहीं, ये बटन दबाने के बाद क्या होने वाला पता. तो उसके बाद और एक ऐड का ऑप्शन, वो भूल गए. दो ऐड के ऑप्शन, दो ऐड के बटन. तो विजुअल सॉफ्टवेयर है, सो यू हैव टू कीप थिंग्स इन माइंड. ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं है कि ये बटन दबाएगा और ये बटन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो सिंपल ही है. वो बटन मैंने ऐड दबाया, अगेन इट इज आस्किंग यू टू ऐड समथिंग. तो आपको रोज और कॉलम्स ऐड करने के लिए बोल रहा है. मोस्ट प्रोबब्ली विल रिड्यूस द नंबर ऑफ रोज. कॉलम्स कम बहुत रेयरली होते हैं, आप रोज को कम करते हैं. तो हम जब डेटा फिल्टर लगाएंगे तो वी ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ रोज बेस्ड ऑन कॉलम सेलेक्ट. सो बेस्ड ऑन कॉलम इंफॉर्मेशन. समझो फॉर एग्जांपल मैंने सिटी चूज की, मैंने फिलाडेल्फिया ही चूज किया, तो आई एम चूजिंग अ कॉलम इन व्हिच फिलाडेल्फिया देयर, बट आई एम रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रोज. वो ध्यान में रखना पड़ता है. सो आई कैन चूज ऑल दीस ऑप्शंस. ये कितने हैं? 21. जितने मेरे कॉलम्स हैं एग्जैक्टली उतने मेरे ऑप्शंस खुले. I can reduce all 21 columns in some aspect. कुछ ना कुछ तो कम कर ही सकता हूँ. So I can choose the city, I can choose the category. 3 कैटेगरी से मैंने बोला था, कैटेगरी में से एक आधा ही चूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक कैटेगरी चूज कर लिया, ओपन कर दिया, it is now telling me which categories I have. फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी, 3 कैटेगरीज है मेरे पास. उसमें से उनको कुछ चूज करना है, कम ज्यादा करना है, आप चूज कर सकते हो. यू कैन आल्सो चूज बेस्ड ऑन कंडीशंस. मुझे ऐसे ही कैटेगरीज दे जिसका प्रॉफिट 10,000 रुपए से ऊपर है, आई कैन पुट अ कंडीशन. और या फिर मुझे ऐसे कैटेगरीज दे जिसका लॉस 0 से नीचे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या फिर सेल्स का बहुत बड़ा नंबर है लेकिन लॉस है. ऐसे कंडीशंस के थ्रू भी आप खेल सकते हो. तो वो ऑप्शन भी आपको हियर राइट में वाइल्ड कार्ड और कंडीशंस का ऑप्शंस खुला है. वहाँ पे आप कंडीशंस डाल सकते हो, आपको जो कंडीशंस डालनी है उसके भरोसे पे खेल सकते हो. टॉप भी है, गिव मी द टॉप 5 पीपल विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स. कस्टमर्स जो मेरे टॉप 5 लोग कौन है जो मेरे से खरीद रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स या इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स आल्सो. सो आई कैन डील विद देम राइट नाउ. टॉप 5 बोलूंगा, टॉप बोलूंगा, सो आई कैन चूज. बाय फील्ड बोला, टॉप 10 बोला, टॉप या बॉटम आपको चूज करना है. फिर से अगेन 21 कॉलम्स. सो यू हैव द ऑप्शन टू चूज अगेन. सिटी के हिसाब से टॉप 5 चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से टॉप 5 चाहिए. सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. So we will not choose anything right now, but choose करने का ऑप्शन ये पे है. ऐड फिल्टर्स, दो टाइप के फिल्टर्स डिस्कस हुए, एक्सट्रैक्ट फिल्टर, लाइव फिल्टर और दूसरा है डेटा फिल्टर. टोटल 6 फिल्टर्स. सबसे ऊपर सबके फिल्टर्स की प्रायोरिटी है, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट सबसे टॉप में जो है वो एक्सट्रैक्ट फिल्टर है. सो दैट इज द मेन फिल्टर. उसके बाद ही बाकी के फिल्टर्स अप्लाई. तो वो ऑप्शन आपका हो गया. सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आपका कनेक्शन. So you can connect to different databases, you can have joins. हम लोग एक ही टेबल के साथ खेल रहे हैं, ऑर्डर टेबल्स के साथ. 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो एक टाइम पे. एक्सेल शीट के तो अनलिमिटेड है, आपको अगर जॉइंस ही करने हैं तो अनलिमिटेड जॉइंस कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये
Done. Main part done. Connections to databases done. Moving on. All I have to do is click sheet 1. नीचे sheet 1 का ऑप्शन है and now I'm in my main काम. मेरा जो काम करने का टाइम है वो आ गया. So I have to work here. ये मेरा राइट साइड में जो ब्लैंक स्पेस है उसको व्यू बोलते हैं. So this is all my view जो पूरा ब्लैंक स्पेस है. कॉलम शेल्फ टॉप में, उसके नीचे रो शेल्फ, बाजू में पेजेस कार्ड, ये नीचे फिल्टर्स कार्ड और ये इंपॉर्टेंट वाला मार्क्स कार्ड. तो 3 कार्ड्स, ऊपर कॉलम शेल्फ, रो शेल्फ, ये व्यू. लेफ्ट में डेटा पेन PANE और उसके ही बाजू में और एक ऑप्शन है एनालिटिक्स पे. तो यू कैन प्ले विद डू एनालिटिक्स. आपको जो AI करने का प्रेडिक्शंस करने के है वो आप कर सकते हैं. सो ऑल दीस ऑप्शंस आर देयर. अच्छा, एक चीज बताना रह गया. देयर इज आल्सो वर्जन टैबल्यू ऑनलाइन. दैट इज आल्सो $70 per month per user. But what we are doing on desktop, we can do the same thing online. Salesforce के साथ इंटीग्रेट हुआ है, इसलिए everything is possible. तो आप इन्हें कुछ डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है. You can play with everything online. टैबलेट पब्लिक फ्री है. बिजनेस में जाके बड़ा समय चल रहा है. टैबलेट डेस्कटॉप अगर आप डाउनलोड करोगे तो पेड. टैबलेट डेस्कटॉप पब्लिक वाला फ्री है. हां, डेस्कटॉप का ट्रायल वर्जन भी आपको ट्रायल चालू करना है. अगर कोई यूज करना है तो एक ट्रायल वर्जन में ट्राई कर सकते हो. नहीं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अलाउ मेल मांगे देयर तक मांगे डाउनलोड का डायरेक्ट डाउनलोड चालू. ठीक है, क्या किया रे प्रोसेस अटैक हो सकती है. हां, लिनक्स के लिए लिनक्स पे नहीं है, वो विंडोज पे .exe फाइल डाउनलोड है. जैसे वही है अपना ओपन कर. फिर भी मैं ऑनलाइन का देख रही हूँ. ऑनलाइन टॉप एंड ड्रैगन्स है. मुझे मेल देखना ही आप. हाँ, देखना ही है. देखने के फिर भी यहाँ से जैसे ऑनलाइन मैंने किया हां स्टार्ट योर ट्यूटोरियल. तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ऐसा तभी ऑनलाइन में तुम्हाला जो कंसल्टेशन जो मागेल अच्छा कॉन्सेप्ट कर झालं तुम्हाला ऍक्सेस हेच दिसणार आहे. काहीच चेंज होत नाही ऑनलाइन मध्ये पण नथिंग चेंजेस. सो यू विल सी द सेम. वो एडवांटेज ही है वो सेल्सफोर्स के साथ इंटीग्रेट करने का. तो मेन ऑप्शंस डेटा पेन और बाजू में एनालिटिक्स पेन और व्यू. किसी ने लीनियर रिग्रेशन ट्राई किया है? लीनियर रिग्रेशन ट्राई किया है? y = mx + c ट्राई किया है? स्कूल में किया है? We had session in the morning. हाँ सेशन. हाँ मैं देख ही रहा था. यही मैं लिखा है. Yes. y = mx + c कैसे लिखा है? तो बचपन में क्या स्कूल में y इंटरसेप्ट स्लोप दो ही ऑप्शन है आपके पास. स्लोप है क्या और y इंटरसेप्ट c है. स्लोप m है. y = mx + c के साथ खेल रहा है. y = mx + c को ये अपन लीनियर रिग्रेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे. नाम डिफरेंट है बाकी काम तो वाले है ना. वो भी करके देखते हैं. ये एकदम इधर लिखा है इसलिए बोल. यस, कोई वो पहले ट्राई कर लेते हैं. वो पहले देखते हैं जो डेटा सेट है उसी के साथ देखते हैं. और एक डेटा सेट आइरिस सुनाएंगे इस चीज का. फ्लावर्स का 3 टाइप के फ्लावर्स है. 3 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी है. 50-50 सैंपल्स भी है. राइट फ्लावर टोटल 150 रोज है आपके पास. तो फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. पेटल लाइन सेपल लाइन चार ही इंफॉर्मेशन है. बेसिकली चार ही कॉलम्स है और लास्ट कॉलम इसमें टाइप ऑफ फ्लावर. So we are trying to predict the type of flower based on only these 4 columns. और based on 4 columns we are only trying to predict based on 2 either petal length or sepal length. petal length वो पंख length और वो भी एक डेटा सेट है. दो ही चीज करते हैं बाकी बस टाइम लगा दो. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसके बाद क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉलम्स जो पेटल लेंथ सेपल लेंथ म्हणजे मेजर्स मतलब मी 50
की झाडांचे पान पूर्ण आणले आणि तुम्ही त्याचे मेजर केले so as a level figure out petal length कितनी petal width कितनी है flower की length कितनी flower की width petal और सेल ये नीचे करने का तो उसका हम लोग उसने इससे तो एक्चुअल डेटा सेट 1980 या 89 बड़ा पुराना डेटा सेट most used data set in the world flowers है actually किसी भी data set का most used data set in the world or actual data set so you will not have any problems in handling it और 150 rows है सारी rows actually 5 column fifth column type of flower होता है वो भी देखेंगे तो बस दो देखा तो काफी correlation coefficient क्या है इसके बाद क्या है इसके बाद मैचिंग कितना हाँ correlation coefficient यानी क्या है Similarity. we're trying to figure basically y को अगर सीरीज जब हम कहते हैं we're trying to figure out x is correlated to y or y is correlated to x x dependent है या independent है with respect to y उल्टा भी दोनों कह सकते हैं जब मैं सेल्स और प्रॉफिट का ग्राफ बना दूं तो प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स प्रॉफिट पे डिपेंडेंट कभी नहीं उल्टा नहीं हो सकता हम लोग प्रॉफिट हर वक्त सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट इफ यू सेल समथिंग तभी प्रॉफिट होगा उल्टा नहीं होगा प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट चल रहा है अपना सेल्स टू होगा तो कोरिलेशन देख रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दोनों में कुछ रिलेशनशिप है तो उतना ही देखने का ट्राई तो वो कोरिलेशन का एक मैट्रिक्स ये दिखाई इसलिए वो पहले ट्राई करना वो पहला हां नहीं टैबलेट ड्रग जो मैंने बोला एक उनका ये वर्जन है दैट विल हेल्प यू बट वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ खेलने के लिए आपको पहले इससे पहले टैबलेट ड्रग के साथ खेलना पड़ेगा that will help you in basically bring it to its structured form. और पूरा unstructured खेल ऐसा आप समझो ट्विटर का एनालिसिस कर रहे हैं ट्विटर के ट्वीट्स का एनालिसिस कर रहे हैं you will never have it in structured form क्योंकि हर चीज चेंज होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो आपको इससे एक बेसिकली इसके लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से बनाना है एआई का प्रैक्टिस है आपको कस्टमाइजेशन की तरफ जाना है जैसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का डिजाइन तो you have to use Python और R to integrate करना पड़ेगा वो भी डेवलपमेंट है you can work with Python right from right in TABLEAU so R भी इसी जैसे तो आपको वो ऑप्शन देता है यहाँ पे उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई मशीन लर्निंग मॉडल से स्टैटिस्टिक मॉडल लगाने की और आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है तो आप कंस्ट्रक्टेड डेटा इमेजेस आल्सो इमेज प्रोसेसिंग बड़ा फील्ड है उसमें आपको ट्रेनिंग का चांस देता है लिमिटेड कैपेसिटी के साथ खुद का कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है it will allow you to play integrate with someone else and will allow you to play so आप libraries आप अगर Python की library की उसकी import करना चाहते हो वो import कर सकते हो उसकी options है but capacity limited ये business driven ज़्यादा है ये research driven कम तो उसमें आपको दिखेगा ज़्यादा capacity नहीं है whatever it has made done excellent job for it जो जहाँ पे customization का option है वहाँ पे वो lack वो आपको इस बार में डिबेट करके काम है तो y mx plus c देख लेते हैं पहले यहीं पे सेल्स और यहीं पे एक प्रॉफिट भी है इसी डेटाबेस में अच्छा हमने कनेक्ट किया है मैं शीट के अंदर आया यहाँ पे मेजर नेम जो लिखा है यहाँ पे एक लाइन है वो दिख तो नहीं रही मेरे लैपटॉप पे दिख रही है एक लाइन है ग्रे कलर की एक लाइन है एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन बिटवीन क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव उस लाइन के नीचे जो है सारे नंबर्स है लाइन के ऊपर सारे क्वालिटेटिव ये उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर और टैबलेau में क्या थे चार नंबर्स थे बस डिस्काउंट प्रॉफिट क्वांटिटी सेल्स चार तो थे उसके नीचे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑर्डर्स काउंट और मेजर बेसिकली मेजर वैल्यूज ये नीचे के चार जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तो अगर ज्योग्राफिकल डेटा है तो ही जनरेट होता है तो अगर आपके पास कुछ भी ज्योग्राफिकल डेटा जैसे मेरे पास यूएस रीजन था सिटी भी है पिन कोड भी है ये और ज्योग्राफिकल एंटिटी वो था तो टैबलेau फिगर आउट कि उसका जिप कोड क्या है और उसने उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिवाइड करके मेजर करके रख दिया था तो इसीलिए वो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिख के आया ऑर्डर्स काउंट हमारे पास कितने रोज है इसका वो काउंट करता है तो मेरे पास 10194 रोज है तो उसने वो काउंट करके रखना है पकड़ के नेविगेशन क्या जीपीएस आप कर सकते हैं मैप्स मैप्स भी कर सकते हैं लाइव फ्लाइट्स का आपको अगर देखना है कि फ्लाइट्स कहाँ से कहाँ कैसे मूव हो रही है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं ऑटोमेटिक तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बैकग्राउंड में डेटा रहना चाहिए होगा मैं आपको एक डेटा सेट दिखाऊंगा हर टाइम
मेजर वैल्यूज, मेजर्स जो है उनकी वैल्यूज कितने हैं, सेल्स में 11,000 होगा, 10,000 होगा, तो उसका भी काउंट रखना है। तो एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे है, छोटा सा पेंट लाइन है, उसके ऊपर ये सारे क्वालिटेटिव डेटा है, तो आपकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो पहला ग्राफ बनाते हैं, एकदम ही सिंपल ग्राफ है, सेल्स और प्रॉफिट देखते हैं, y = mx/c पहले खेलते हैं। सेल्स को डबल क्लिक किया, एक सेल्स का ग्राफ बन के आ गया और ऊपर एक सम सेल्स लिख के भी आया, वो रोज में गया। प्रॉफिट को डबल क्लिक किया, एक ग्राफ बन गया, अभी डबल क्लिक ही किया, बाकी कुछ किया नहीं। पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ हो गया, एक ही सिंगल पॉइंट खड़ा है, अभी वो क्यों हुआ? हाँ अभी कैसा है कि जब W देखता है कि मैंने सेल्स पहले क्लिक किया, इंफॉर्मेशन कुछ भी दे रहा था, तो सम ऑल सेल्स, जितने सेल्स है 10,194 रोज है, उतने सेल्स के नंबर है, सम ऑल दोस 10,194 सेल्स एंड गिव मी नंबर 1.17 पॉइंट समथिंग मिलियन, कुछ भी नंबर है। सेम थिंग है डेबिट प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट भी डबल क्लिक किया, उसने करके दिया, बट प्रॉब्लम क्या हो गया, अभी एग्रीगेशन बोलते हैं उसको, बाय डिफॉल्ट एग्रीगेट करता है मेजर्स, तो बाय डिफॉल्ट एग्रीगेशन इज सम, अभी वहां पे उसने करके तो दे दिया, पर सम टोटल प्रॉफिट वर्सेस टोटल सेल्स ऐसा होगा, तो इसीलिए एक ही पॉइंट है, सो इट इज टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स, एक ही सिंगल पॉइंट जनरेट हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं, ऑल्दो एक्चुअल पॉइंट जनरेट जो होने चाहिए वो थे 10,194, अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो 2.32 million sales, 292,000 profit, so that is my total profit, total sales, मेरा डेटाबेस में जितने भी रोज है उसका सब मिला के इतना दिखा रहा है, इतना है। इसमें अभी मुझे I don't want this single point, I have to go to analysis, click aggregate measures, it is giving me all 10,194 points, सारे के सारे points जितने रोज है वो सब दिखा रहा है, पर थोड़ा सा एक्सिस का प्रॉब्लम है, प्रॉफिट नीचे खड़ा है, तो यहीं पे ऊपर एक स्विच का ऑप्शन है, this looks better, sales versus profit में खेल रहा हूँ, तो y = mx/c का ही प्लान है, जीरो का पॉइंट आगे है, ये मेरा जीरो पॉइंट है, यानी जीरो सेल्स वहां पे हो रहा है, ये जीरो प्रॉफिट वहां पे हो रहा है, आगे का सेल, तो जीरो का पॉइंट वहां पे मार्क है, मेरा पूरा डेटा लगभग जीरो का एवरेज है, तो मैं स्टूडेंट को एक्टिविटी देता हूं, व्हाट कैन यू टेल मी फ्रॉम दिस ग्राफ, कुछ बोल सकते हैं, 10,194 रोज है, ये इतना इंफॉर्मेशन है, और मेरा ग्राफ ऐसा प्लॉट होके आया, so what can I tell my boss, what can I tell my client कि क्या होगा तेरे को, No profit or loss. हाँ Nearby same. nearby same value, बहुत सारे values, बस दो प्रॉब्लम्स हैं मेरे लाइफ में, एक अच्छा है और एक बुरा है, पहले बुरे का डिस्कशन करते हैं, पहले बुरे का डिस्कशन करेंगे, लगभग 10,000 पॉइंट जीरो के आजू बाजू खेल रहे हैं प्रॉफिट के टर्म्स, लगभग 10,000 आउट ऑफ 10,194 पॉसिबल वैल्यूज, 10,000 पूरा गुच्छा जीरो के आजू बाजू खड़ा है, ये मेरा प्रॉफिट बोल नहीं रहा, 10,000 चीजें मिलती तो जीरो ही प्रॉफिट, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। दूसरा प्रॉब्लम भी है, ग्राफ देख के आउटलायर्स क्या है, आउटलायर्स values which are very different from the their values which are extremely different from average growth हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे ये बाकी के पॉइंट्स हैं, एक्चुअली बीसी है, ये दो ये जो बाकी के खड़े हैं, they are my problems and they are good and bad both, बाकी के 10,000 का तो टेंशन नहीं, 10,000 190 का पड़ा, 10 ही बचे, जो जीरो के ऊपर ही खड़े हैं, सेल्स एक्स एक्सिस पे है तो सेल्स तो थोड़ा बढ़ रहा है, इट इज फाइन, थोड़ा जा रहा है, सेल्स का टेंशन नहीं, प्रॉफिट जीरो के बाजू में और जीरो के नीचे भी बहुत है, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट दिस, इसके नीचे पूरा प्रॉफिट नेगेटिव है, सो लॉट ऑफ माय पॉइंट्स आर नेगेटिव, सो बस पेज भी रहा हूं पर भी नेगेटिव ही लॉस में ही, तो भी प्रॉब्लम है, और मेरे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छे प्रॉब्लम्स है वो प्रॉफिट के जीरो लाइन के ऊपर है, ये जो मेरे 10,000 पॉइंट्स है वो मेरे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, वो अच्छे प्रॉब्लम्स क्यों है, बिकॉज वो मेरे को प्रॉफिट देके जा रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम है क्योंकि कितने कम लोग हैं, 10 ही लोग हैं, 10,000 में से 10 ही लोग मेरे को क्वालिफाई करके दे रहे हैं कुछ प्रॉफिट, सबसे अच्छा प्रॉब्लम ये है,
सेल्स 17,500, प्रॉफिट 8,500, सेल्स $17,500, प्रॉफिट कुछ 17,000 का कुछ तो ही माल बेचा और उस पे 8,500 माल डॉलर का मैं प्रॉफिट कमा के बैठा। वेरी गुड प्रॉब्लम, एक्सीलेंट प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम आनी चाहिए, टेंशन ही नहीं, ऐसी प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम आए तो अच्छा है, आई कैन टेल माय बॉस या क्लाइंट ये ऐसे प्रॉब्लम लाते जा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ऐसे इसको मैं हैंडल करता है ना, ये अच्छे है। इधर डेंजरस बंदा बैठा, $22,000 का सेल है, नेगेटिव 1,000 का प्रॉफिट, इतना बड़ा माल अमाउंट बेचा है फिर भी लॉस नहीं, तो डेंजरस प्रॉब्लम में बैठा है। वहां पे मेरे को क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, व्हाट एम आई सेलिंग फॉर सच अ ह्यूज अमाउंट एंड स्टिल आई एम इन नेगेटिव, तो वो आपको रिपोर्ट में डालना पड़ेगा कि ये भी है प्रॉब्लम। उससे भी एक डेंजरस पॉइंट है, 4,500 का ही माल बेचा है और 6,500 का लॉस है, ये उससे भी डेंजरस है। ये 4,500 का सेल ही 4,500 का है और फिर भी मैं लॉस 6,500 का लेके आ रहा हूँ, तो वो सबसे डेंजरस पॉइंट सबसे नीचे है। तो मुझे रिपोर्ट बनाना है 10 पॉइंट्स, मेरे को एक ही ग्राफ पे इतना इंफॉर्मेशन हो गया, आई कैन क्रिएट गुड रिपोर्ट, 10,000 पॉइंट्स, 10,000 जो चीजें है वो निकाल दो और ये 10,000 आप फोकस करो, उसमें भी जो पॉजिटिव है उसके ऊपर फोकस करो, नेगेटिव पर फोकस करके जो नेगेटिव चीजें चल रही है उनको कैसे हैंडल करना है, तो ये रिपोर्ट बिकम इजी। आपको रिपोर्ट बना के देने के लिए एक ही ग्राफ, बट अभी क्वेश्चन मार्क है y = mx + c, are my profits increasing with respect to sales, gain y = mx, स्लोप पॉजिटिव रहा तो आपके प्रॉफिट्स ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, फंडामेंटली पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप है, कैन आई टेल विद माय आईज, लग तो रहा है क्योंकि ऊपर के जो पॉइंट्स है वो अच्छे लग रहे हैं, तो चेक करने का है क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग करनी पड़ेगी लाइन y = mx + c, y = mx + c, डेटा पेन में खड़ा हूं मैं, उसके बाजू में एनालिटिक्स पेन है, एनालिटिक्स पेन में गया, ट्रेंड लाइन नाम का ऑप्शन है, ट्रेंड लाइन नाम का ऑप्शन लिया, लीनियर रिग्रेशन नाम का ऑप्शन है, छोड़ो लाइन आ गई, एआई डन, प्रेडिक्शन डन, y = mx + c डन, वैल्यूज क्या है, प्रॉफिट = 0.18 टाइम्स सेल्स -12, y = mx + c का इक्वेशन भी लेके दे दिया, उसके नीचे R² जो इसके बाद का काम है, R² एफिशिएंसी निकालता है, आपका जो मॉडल आपने प्रेडिक्ट किया है, ये मेरा प्रेडिक्टेड लाइन, मैंने एक मॉडल बनाया y = c का और उसका लाइन का इक्वेशन बना के दिया है, दैट इज एक्चुअली टेलिंग यू कि मेरा जनरल डेटा कैसे फिट हो रहा है, ये मेरा जो मॉडल मैंने बनाया y = mx + c, इज इट गुड इनफ, ये तो चेक करना पड़ेगा, तो वो गुड इनफ है क्या, वो इन टर्म्स ऑफ R² आप बता रहे हो, और R² इतना कुछ खास नहीं है, R² है 0.21, 21% की एक्यूरेसी नहीं है, तो दैट टेल्स यू ये कुछ भी गड़बड़ है। मैंने मेरा y = mx + c स्ट्रेट लाइन का जो मैंने मॉडल चूज किया गया है, मैंने जो चूज किया है दैट इज नॉट एफिशिएंट, वो इफेक्टिवली मेरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, 21% एफिशिएंसी है, मैंने कोई भी पॉइंट चूज किया तो 21% ही चांस है कि मेरा मॉडल एक्यूरेट हो पाएगा, उसका आंसर क्या है, वो प्रॉब्लम है, 21% एफिशिएंसी है, कुछ भी नहीं है, आई हैव टू इंप्रूव, p वैल्यू लेस देन 0.0001, वो तो सिग्निफिकेंट ही रहने वाला है, 1x वर्सेस 1y के अंदर, तो x इज नेचुरली y बेसिकली प्रॉफिट है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन x, उसको निकाल ही नहीं सकते आप, तो उसका p वैल्यू सिग्निफिकेंट ही रहेगा, आपको टेंशन नहीं है, पर वो इतना सारा चीजें अपने को एक ही लाइन में एक ही चीज में मिल रहा है, तो एडवांटेज है, बैकग्राउंड में डेटा चेंज हुआ, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम इन हैंडलिंग डेटा, जितना भी बड़ा डेटा हो, as long as लाइव डेटा अपना कंप्यूटर हैंडल कर पा रहा है, हैंडल कर रहा है, तो टेंशन नहीं है, पर तो दैट आल्सो टेल्स यू कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आपका जो है वो फिट गुड नहीं है, एफिशिएंसी बहुत कम है, आई कैन गो फॉर समथिंग एल्स, ट्रेंड लाइन की जगह पे मैं पॉलीनोमियल ले लिया, सीधे लाइन की जगह पे मैंने पॉलीनोमियल फिट करने का ट्राई किया, अगेन मैं ये इक्वेशन का, ये लाइन का इक्वेशन देख सकता हूँ, 0.21 के बाद अभी मैं 0.34 पे आया, एफिशिएंसी थोड़ा इंक्रीज हो गया, 21% से एफिशिएंसी इंक्रीज होकर 34% पे आ गया, हमारा एक लाइन अभी स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, वो भी कर्व बन गया, पर अभी भी प्रॉब्लम है 34% ओनली, 34% इज नॉट रीजन, प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो मेरे अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स है, दे आर डोमिनेंट प्लेयर्स, ये कर्व को चेंज करने के लिए वो लास्ट वाला नीचे का अकेला पॉइंट काफी है,
उसका वेटेज इतना ज्यादा है कि वो पूरे कर्व को बेंड कर रहा है एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको आउटलायर्स का वेटेज भी ढूंढना पड़ेगा। जो आपके आउटलायर्स है आर दे एक्चुअली बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू योर मॉडल और नॉट, ये आपको ढूंढना पड़ता है। और इस केस में एक्सट्रीमली पावरफुल आउटलायर्स सारे बहुत भयंकर वेटेज के साथ बैठे। निफ्टी स्टॉक मार्केट वाले है क्या? निफ्टी 50 रिलायंस का वेटेज कितना है? 20% के अबाव। रिलायंस प्लस एचडीएफसी बैंक प्लस टाइटन या टीसीएस 50% अबाव लेके चले जाएंगे। 4-5 ही लोग हैं, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और 2-3 लोग, ये 5-6 लोग आउट ऑफ 50, ये 5 लोग ही 50% एंड अबाव कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी के इंडेक्स सेंसेक्स 30 में से भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो वो इतने पावरफुल है कि 5 लोग ही ऊपर नीचे हो गए तो पूरा निफ्टी हिला डालता है। तो वैसे ही ये लोग हैं, ये जो बाहर के आउटलायर्स है ये इतने पावरफुल है कि थोड़े ऊपर नीचे होंगे तो ये कर्व हिल जाएगा, इतना पावरफुल उसका डोमिनेंस है। तो अपने को वैसे ही देखना है। तो इसमें से एफिशिएंसी समझ में आ रहा है कम है, तो ये हो गया लीनियर रिग्रेशन। पॉलीनोमियल रिग्रेशन भी है, अगर आप उसका पढ़ पा रहे हैं तो दैट इज सेल्स रेस टू 3, उसके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वो अलग अलग खेल सकते हैं। बट दैट इज सिंपल एग्जांपल ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन या फिर पॉलीनोमियल रिग्रेशन इन टैबलेau। कीबोर्ड को अब तक हाथ लगाया नहीं, ध्यान में रखना है। कीबोर्ड को अब तक टच करने का टाइम आया नहीं, अभी तक बिना कीबोर्ड के ही खेल रहे हैं। मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ भी कस्टमाइजेशन किया नहीं है ना। वो पावर ऑफ टैबलेau ही है, आपको ज़्यादा टाइम दे रहा है खेलने के लिए और सेकंड्स में काम हो रहा है, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। इफ़ यू नो व्हाट यू वांट आराम से खेल सकते हैं। लेकिन दूसरा आयरिस, मैं अगर वो चालू हो गया होगा, किसी का है हमारा लैपटॉप है तो दूसरा है। हाँ नहीं, टैबलेau प्रेप जो है वो करेगा। टैबलेau प्रेप आपको हैंडल करने के लिए देगा चीजों को। You have to plan to pre-process or clean the data set. You need to use टैबलेau प्रेप। तो टैबलेau प्रेप एक अलग सॉफ्टवेयर है जो आपको इससे पहले यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा चीजें क्लीन कर देगा। एक ऑप्शन यहाँ पे है, हमने यूज नहीं किया हो, पर मैंने एक दिखाया था कि कॉलम नंबर 1 में 111 लिखा था। आई थिंक मैंने बोला था, पता नहीं बोला था। हाँ, ये 111 लिखा है। रो नंबर 1 में मैंने जबरदस्ती 111 लिखा है 4 बार, although it should be only 1 because roll number 1 से बनता है, वो आईडी 1 से है। मैं जबरदस्ती काटेगा करके थोड़ा सा प्रेस करके टैबलेau में रखता हूं और मैंने उसको अपने क्लीन करने को बोला नहीं, उसको क्लीन करने के लिए बोला नहीं है। यहाँ पे एक छोटू सा ऑप्शन है, यूज डेटा इंटरप्रेटर, और वो ऑप्शन में सिर्फ क्लिक करता हूँ, वो 111 गया और 1 आ गया। तो आपका वो क्लीनिंग हो गया। थोड़ी सी चीजें हैंडल कर सकते हैं। 0 है बताएगा, 111 मैं उसको समझ में आ गया कि मैं 1 लिखना चाह रहा था पर मैंने 4 बार जल्दी से लिखा है, उसमें ऑटोमेटिक क्लीन करके उसको 1 करके रखा। तो वो भी लिखा पड़ता नहीं, मैं जितने बार बटन दबाऊंगा उतने बार वो एक्स्ट्रा क्लीन करने का एफर्ट करेगा। मैं 80 पर लर्न वो ऑटोमेटिक और उसको अपग्रेड कर रहा है, इसके बाद वो कर रहा है। आई एम टेलिंग इट क्लीन मोर, तो और करते बैठे वो और एल्गोरिथम स्टार्ट करेगा पीछे और क्लीन करने का ट्राई करेगा। तो अपने को अपना काम हो गया, 1 हो गया है, आंसर मेरा आ गया, पूरा ऑटोमेटिक क्लीन। मिसिंग वैल्यूज को, मिसिंग रोज को वो क्लीन करता है। अगर आपका समझो पहले 10 रोज में कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। बट रोल नंबर 1 में पहले 10 इंफॉर्मेशन है और रोल नंबर 20 तक की और कुछ भी नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएटेड है, वहां पे वो नल लिख के आएगा। आपको उसको कुछ भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको वो सोचना पड़ेगा एक्सेल शीट या फिर टेक्स्ट वैल्यूज का। तो जहाँ पे भी कस्टमाइजेशन आएगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट या दो से आपको करना। तो ये हो गया लीनियर रिग्रेशन। आयरिस पे जाएंगे, क्लस्टरिंग, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन यू आर टेलिंग, यू आर प्रेडिक्टिंग द नंबर्स एक्चुअली, द आउटपुट इज एक्चुअली अ नंबर, यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट वन नंबर बेस्ड ऑन अनदर नंबर। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी रहता है। और आयरिस डेटा सेट जो मैं बाहर ही दिखा सकती हूँ फॉर्मूला आपको दे दूंगा मैं, और एक आयरिस उसका भी देख सकते हैं। क्लस्टरिंग है, वो कैंसर है कि नहीं, कौन सा टाइप का कैंसर है, ये कौन सा आता है मेडिकल फील्ड में आप खेल रहे हो, क्रिकेट का उसमें
या कौन से टाइप की कार है, टोयोटा है, कोरोला है, कौन सी है, क्या है, तो ट्राइंग टू क्लस्टर लॉजिक देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में आप क्लस्टर्स कर रहे हो, इट कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली कौन सा चीज है, और वो क्लस्टर भी बता सकता है कि ये सारे एक साथ खड़े हैं, वो उतना खेल सकते हैं, तो उतना भी ट्राई कर सकते हैं। आई एम all we can say is these are not the good fits for the ये जो मॉडल आप यूज कर रहे हो they are not good to lead any good आप कौन सा भी ट्राई कर सकते हो पॉलिनोमियल ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं अभी एक ही काम बचा है ये आउटलायर्स को निकालना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स इसी पीसी so you can use that weightage के साथ आपको आउटलायर्स निकालने हैं and then you will try this one और वो कॉलम्स निकालने का काम है वो और फील्ड्स निकालने but still you can go on आपको हाँ नहीं डेटा सेट एक्चुअली रैंडम है नॉर्मल डेटा जनरली अपना एजम्पशन करते हैं रिलेशंस में एजम्पशन की नॉर्मल डेटा है यूनिफॉर्म डेटा है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है एरर सर यूनिफॉर्म होता है काफी सारे एजम्पशन करते हैं जो आप लीनियर रिलेशन कर रहे हैं वो अपने एजम्पशन डेंसिटी नहीं के लिए अपना रिलेशन कर सकते हैं so most of the times high data the accurate data you never have perfect data आगे आपको क्लीन करना पड़ेगा देयर नो डाउट यहाँ पे एक ही है जीरो नहीं जीरो जो है इन टर्म्स ऑफ सेल्स और वहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है इन्हें कुछ गलत दिखा गया है वो डेटा सेट परफेक्ट पर ये एनालिसिस उसके लिए नहीं है हाँ आप एवरेज वैल्यू निकाल के सिंपली आप कॉलम्स पे ओरिजिनल डेटा सेट कुछ चेंज नहीं ओरिजिनल में कहीं चेंज लोकांच्या घरी जातो चहा नाही मला काही प्रॉब्लेम नाही चहाला बोलवा तुम्ही असं ती मला काही चहा घ्यायचा कोणाला यूज करायचं ना एक आहे दोन्ही काही नाही HDFC बैंक का prediction but then with respect to quarterly results ऐसा stock का quarterly results के भरोसे पे stock का price ऑर्डर डबल लिंक करेगा आज हम शीट पर मध्ये आपके काही कन्सेप्ट बेसिक से टॅबलेau काही सांगितलं नाही ना इनिशिएट करने
आम्ही स्वतः एक्सप्लोर करावं. स्टॉक मार्केट आपको बहुत सारे टूल्स जो तो है अनलिमिटेड टूल्स. कोई प्रॉब्लम ही नहीं कि यू हैव टू बी एज स्टॉक मार्केट से माया है इतने अलग टूल्स को नहीं प्रॉब्लम मतलब स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम यार बाय विल स्टिल बी अगर आपका परसेंटेज आपके नंबर ऑफ टर्म्स आप 100 ट्रेड्स करने वाले हो 70 ट्रेड्स में आपको 651 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट मिला 49 में प्रॉफिट नेगेटिव है वो एक लाइन को चाय का कर दिया है. जो वेस्ट होता है उसको ही मतलब पूरी तरह मजे ले रहे हो. तो पीछे रहते हैं ना अपन नहीं पीते कभी त्यांना सांगू दिलं सांग. सरांना चहा नाही दिला तसंच पॉवर बीआय पण Power BI. बिझनेस इंटेलिजन्स मायक्रोसॉफ्ट सर पूर्ण इंटिग्रेटेड विथ आवर कम्प्युटर्स विंडोज तो एडवांटेज सर की एक्सेल जो दिली that's a फ्री आहे यूज करायला फ्री हे जसं पेड आहे ते यूज करायला फ्री पण तुम्ही जर जेव्हा सर्व्हिस द्यायला तेव्हा तो चार्ज आणि त्याची म्हणजे जर तुम्हाला कंटिन्युअस यूज करायचं असेल तर काय केस बाय केस जर एकच प्रोजेक्ट असेल तुमच्याकडे तर खूप तुम्हाला हा तुम्हाला माहिती आहे की 10 वर्षाचा प्रोजेक्ट आहे करणार आहे सेल्स फोर्सनी या छोट्या कंपनी मोठ्या कंपनीला विकत घेतलेलं पहिला मोठ्या कंपनीला विकत घेतलं सेल्स फोर्सनी टॅब्लेला विकत ऍक्च्युअली सेल्स फोर्स सीआर डेव्हलप ERP सॉफ्टवेअर तर त्यांनी बिझनेस इंटेलिजन्स टूलला विकत घेतलं तर तेव्हा सेल्स फोर्स खूप छोटा होता त्या ग्राफमध्ये ऍक्च्युअली दोन लीडर आहे बाकी सगळा सेल्स फोर्स खूपच खाली इन टर्म्स ऑफ डेटा व्हिज्युअलायझेशन खूप खाली खूप छोटा प्लेयर होता आणि खूप मोठ्या प्लेयरला खाऊन इंटिग्रेट केलं 3 वर्ष आय थिंक कमला जस्ट पहिले घेतलं असेल नाव परफेक्ट इंटिग्रेशन म्हणून ते आइन्स्टाईन ऍक्च्युअली मागे आइन्स्टाईन दिलं झालं फॉर्म्युला म्हणून त्यांनी टॅब्ल्यू एआय नावाचा प्रोडक्ट काढला गूगलचे पण खूप सगळे सेल्सफोर्स आहे ओरॅकल्स आहे सगळे टॅब्ल्यू आहे फ्री में सीखने को मिल रहा है
Google form भी बनवा दिया तो CSV sheet हाँ Google form बनवा ऐसे कोई बनाने के बाद बनाने के बाद गूगल फॉर्म का ये गूगल स्टैंडर्ड पब्लिश करके बाहर भी हो गया जॉब भी मिल गया लेकिन सर्टिफिकेट के बोले कि
A पण actually ये सांगितलं नाही पूर्ण SQL जे मी करतोय nothing except SQL 100% एक भी SQL आणि SQL खूप वापरलं जातं आता. आणि फक्त दिसायला चार्ट दिसत आहे बॅकग्राऊंड मध्ये SQL actually it's एक application आहे extension आहे it will tell you कोणती SQL करत आहे मी काही पण असं जे करतो ग्राफ प्लॉट केला त्याचे actually SQL वो SQL क्वेरी रन कर रहा है सिर्फ आपको डिक्टेट एंड ग्राफिंग तो पूरा SQL में पढ़ा नहीं अपना काम आसान कर देता है. SQL की क्वेरी एक्सटेंड कर उसको सरप्राइजिंग टैग है उसकी चालू एक एक्सटेंशन है प्रॉपर एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर सकते हो वो बताएगा कि तुझे ये बटन दबा ये ग्राफ कर दिया वो जब फॉर्मूला डाला ये किया कौन सी SQL की पूरा टाइम कभी बच्चे बहुत स्मार्टली यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कल ही बता रहा हूँ सर कैलकुलेटर का आपको सॉफ्ट कोड मिल गया तो आपका प्रॉब्लम क्या है सॉफ्ट कोड दे रहे हैं या नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट वो ले लो और चैट जीपीटी में डाल दो एक्सप्लेन करो यार कमांड बाय कमांड एक्सप्लेन करता है. Beauty lies in this one. Use it with intelligence. बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है लेकिन हमको मालूम नहीं और हमको अभी यही होना है कि अपने बच्चे को गुरु बनाए. छोटे जो यंगस्टर हैं ये बहुत अच्छे हैं लोग मालूम होता है कि कैसे शॉर्टकट मारना है टच में रहना है क्योंकि अब धीरे धीरे हम ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं तो उसको अपडेट रखना भी चैलेंज है. too fast कधीतरी आपणही आपल्या वरिष्ठांना असंच म्हटलेलं आहे का एवढं काय कठीण आहे आपले त्या वयात आपण आता काय आपण चालतो आता आपल्या पोराला तरी आपण माझे पुण्याला करू सो टाइम स्टॉप आलेला आहे रोल चेंज आईएस का एग्जांपल दिखा दो प्रेडिक्शन वाला देखिए थोड़ी है एक्चुअली वो एग्जांपल करने के लिए ठीक है मैं लिखा आपका इस पे डायरेक्ट लगा देंगे सर हां या लैपटॉप पर डायरेक्ट करें कुठला लावायचं आहे तो आणि हा सेमच आहे सेम हां म्हणजे त्याच्यावरही तेच इन्स्टॉल आहे तुम्ही करू शकता फक्त त्याला इंटरनेटचा ऍक्सेस नाही आता वायफाय बंद आहे तुम्ही जास्त 0 पासून चालू करू का कुठनं डाउनलोड करायचं तिथनं दाखवतो त्यातनं काय प्रोसेस आहे ते सगळं दिसून काय आहे आयएस डेटा सेट जो मेरे फ्लावर्स है 150 एग्जांपल्स यानी सैंपल्स है 150 रोज है 4 कॉलम है फ्लावर केयर में 4 चीजें मालूम है पेटल सेपल और बेस्ड ऑन दैट 4 कॉलम्स ओनली हम खेल रहे हैं अपना ही है वो 4 कॉलम की वजह से कनेक्ट है कि कौन से टाइप का फ्लावर है तो देख के ये मशीन इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कौन सा टाइप ऑफ फ्लावर तो अपना ये उतना देखने का ट्राई ये अच्छा और इधर लिखा हुआ है So very good resource to have for data sets. UCI Machine Learning Repository, University of California at Irvine. इन्होंने ये डेटा सेट्स जमा करके रखे उनकी वेबसाइट पे ऑल ऑथेंटिकेटेड डेटा सेट्स एंड ऑल रेडी फॉर यूज. तो अपने हमें यूज करना है तो कुछ भी नहीं UCI मशीन लर्निंग डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिपोजिटरी है वो ऑटोमेटिकली कर लेता है फिगर आउट कर लेता है क्या करना है. कहीं वेबसाइट पे जाना है वेबसाइट पे लॉट ऑफ डेटा बहुत सारे काउंट भी करना है कितने डेटा सेट्स है. सबसे पॉपुलर आइरिस लेफ्ट में पहले ही आइरिस फ्लावर्स के बारे में है
मोस्ट यूज डेटा सेट भी है और सिंपल भी है। तो सब्जेक्ट एरिया लाइफ साइंस डिपार्टमेंट का एरिया ऑन एसोसिएटेड टास्क क्लासिफिकेशन। So I am not going to do a regression analysis here. I am trying to do a classification यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टाइप का एनालिसिस करने का प्लान कर रहे हैं। ट्रू और फॉल्स भी नहीं कर रहे एक्चुअली, बट ट्राइंग टू क्लासिफाई थिंग्स। तो क्लासिफाई यानी हम लोग सिर्फ फ्लावर्स क्लासिफाई करने का ट्राई करेंगे। फीचर टाइप रियल है, डेटा सेट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 150 यानी सैंपल्स 150 है। फीचर्स ओनली 4, so you only have 4 columns. सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ और लास्ट है क्लास। दैट टेल्स यू कि कौन सा फ्लावर, कौन से फ्लावर के क्लास को बिलोंग करता है। अगर आपने ढूंढना फ्लावर कैसा है, विकिपीडिया है, ये ऐसे कुछ जो फ्लावर दिखते हैं, तो हम इनके ऊपर खेल रहे हैं। सो वी आर प्लेइंग फॉर। तो आईरिस डेटा सेट आपको क्लिक ही करना है। डेटा सेट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डेटा सेट डाउनलोड करेंगे तो एक CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली एक फाइल मिलेगी। आईरिस डेटा आणि आईरिस नेम्स दो फाइल्स मिलेगी आपको। ये डेटा सेट का इंफॉर्मेशन दे रहा है, नेम्स और डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन। दिस इज हाउ द एक्चुअल डेटा सेट लुक्स इन ए सिंपल comma separated variable. So 4 columns and actually 5 columns. Fifth column is basically the name of the flower. First 4 columns information about that flower. Each flower, हर एक type के flower को 50 examples है। Iris setosa, Iris virginica और Iris versicolor। 3 flowers है आपके पास। 3 flowers के बारे में data set। तो वो डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आपको उसका एक एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा। तो वो जब डाउनलोड करने के लिए देता है, इट डजंट यू कॉलम नेम्स, वो आपको इनपुट करने पड़ेगा। तो इनपुट करने पड़ेंगे तो आपको एक्सेल में उसको इनपुट या इंपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे टेक्स्ट फाइल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाइथन ये अपना टैब्लू कैन हैंडल टेक्स्ट फाइल आल्सो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज भी दिया, बट इट विल नॉट बी एबल टू जनरेट कॉलम नेम। जो हेडर नेम्स है आपके, वो जनरेट नहीं करेगा। आपको उसके लिए किसी वो टेक्स्ट फाइल में ही उसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक्सेल में कन्वर्ट करके उसको सिर्फ एक्सेल में स्टोर करके रखा है। सेपल लेंथ फर्स्ट कॉलम, सेपल विड्थ सेकंड कॉलम, थर्ड पेटल लेंथ, फोर्थ पेटल विड्थ एंड लास्ट इज क्लास डिस्टेंस विद व्हिच टाइप ऑफ फ्लावर इट इज। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। टोटल रोज 150। 3 फ्लावर है, सेटोसा के 50 एग्जांपल है, वर्जिनिका के 50, वर्सिकलर के 50। उतना ही है, इतना ही डेटा सेट है। एंड वी आवर प्लान इज basically to identify the type of flower based on the given information। इन्हें जो कॉलम्स है लेफ्ट में, can we try to figure out which type of flower this is। मेरा एम वो है, क्लासिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो मेरा एम 3 एग्जांपल्स के साथ क्लासिफाई करने का। अच्छा, मैंने टैब्लू के ज़्यादा बेसिक्स लिए नहीं, फिर बाद में टाइम अगर फिर से आया तो देखेंगे। तो सिर्फ वो एक्सेल शीट इंपोर्ट किया है, नथिंग फैंसी। आपने सिंपल इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद बाय डिफॉल्ट एक ही उस पे एक्सेल शीट थी। एक्चुअली एक्सेल वर्कबुक में एक ही एक्सेल शीट थी, तो उसने ऑटोमेटिक ओपन करके रखा है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस। तो उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख ली, नाम भी बराबर दिए। इट हैज आइडेंटिफाइड द डेट टाइप।
ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है ABC, हैश मार्क हैश मार्क हैश मार्क, 4 हैश मार्क्स है, दैट मींस दे आर नंबर्स, और एक ही लास्ट वाला जो है ABC है, दैट इज अ स्ट्रिंग। सो नाम आपका जो है उससे आइडेंटिफाई करने का है। तो टैबल्यू फिगर्ड आउट कि इतनी चीजें हैं मुझे करने के लिए। अभी यहाँ पे और मुझे करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ फिल्टर लगाने की जरूरत है, छोटा सा डेटा सेट, तो आई कैन डायरेक्टली कम आने के बाद फिर से एक्चुअली मेजर नेम्स, ये जो है हाइलाइटेड, उसके नीचे एक लाइन जो दिख रहा है थोड़ा लाइट ग्रे है, दैट इज सेपरेटिंग क्वालिटेटिव डेटा वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा। उसके नीचे जो है वो सारे नंबर रिलेटेड कुछ चीजें हैं, उसके ऊपर सारे क्वालिटी की। तो यहाँ पे ज्यादा खेलने के लिए नहीं है ऑप्शंस। पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, डबल क्लिक किया तो अगेन उसने ऐड करके पूरा सम करके दे दिया, इसलिए एक ही पॉइंट। इफ आई टू रिलीज इट तो मुझे एनालिसिस में जाके एग्रीगेट मेजर्स को क्लिक करना पड़ता है। सो आई एम टेलिंग इट टू डू नॉट सम इट, जैसे है वैसे दिखा। तो पेटल विड्थ नीचे है, पेटल लेंथ लेफ्ट में है, और अभी 150 पॉइंट्स। सो इट हैज गिवन अस ऑल द पॉइंट्स फॉर ऑल द रोज। अभी इसके बेसिस पे हमें खेलना है। So this is petal length versus petal width. यहाँ पे I cannot tell based on the color. I am not able to justify right now. So I can do a simple thing. पहला actual नाम दे देते हैं। Actually में ओरिजिनल डेटा सेट में ही है जो हम खेल रहे हैं। तो ओरिजिनल डेटा सेट का क्लास नाम का ऑप्शन अपने पास पहले ही है। कौन सा फ्लावर है हमें ऑलरेडी मालूम। तो all I can do is मैं क्लास को कलर में लिखा था। क्लास को कलर में ड्रॉप किया, तो जस्ट चेंज द कलर। और वो पॉइंट सभी कलर कोऑर्डिनेटेड है, यानी कौन सा फ्लावर है वो कलर के हिसाब से बता रहा है। तो 3 फ्लावर्स इधर अपने पास लेजेंड आ गया है, और तीनों फ्लावर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। टोटल 150 पॉइंट्स, एक भी मिसिंग पॉइंट नहीं है, परफेक्ट पॉइंट है, नो जीरोस, नथिंग, नो एरर। ये डेटा सेट में कोई एरर नहीं है। तो नीचे का ये सेटोसा है, बीच में वर्जिनिका हो गया, और अभी बीच में वर्टिकल हो, एक्चुअली हम जा सकते हैं नीचे ड्रैग करेंगे तो आयरिस सेटोसा। इसको टूल टिप कहते हैं। होवर और समथिंग, ये ब्लॉक बॉक्स आएगा तो टूल टिप है, यू कैन जनरेट व्हाटएवर यू वांट। उसके अंदर भी जो लिखना है वो भी इन्हें फिक्स कर सकते हैं, यू कैन चेंज दैट। तो टूल टिप के अंदर अभी लिखा हुआ है डेटा सेट के बारे में। वो फ्लावर का पेटल लेंथ 1.7, पेटल विड्थ 0.3 और क्लास आइरिस सेटोसा का वो एग्जांपल है। ऐसे ही बीच का फ्लावर वर्सिकलर, लास्ट फ्लावर वर्जिनिका। तो 3 फ्लावर्स है, टोटल 150 पॉइंट्स उसने कलर के हिसाब से आपको बता दिया। सो दिस इज एक्चुअल। तो हमें ये ट्राई करना है, सिमुलेशन हमारा या मॉडल जो रहेगा, इट शुड ट्राई टू डू दिस। आउटपुट शुड बी लाइक दिस फॉर आवर मॉडल। अपना एम वो है क्लासिफिकेशन का कि मेरे मॉडल ने जितना क्लोज टू एक्चुअल पॉइंट्स जमे उतना ट्राई करना चाहिए। तो ये तो एक्चुअल है, तो उससे मालूम है। अभी मेरा काम सिंपल है, मुझे फिर से वही चीज लेनी पड़ेगी, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। विड्थ नीचे है, बस उसका ध्यान में रखा। अगेन आई कम एंड go for aggregate marks. I have created the data points. अभी मुझे इसमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाना है। तो अगेन गो टू एनालिटिक्स। लास्ट टाइम हमने ट्रेंड लाइन चूज किया था और एक लाइन ड्रॉ किया था। दिस टाइम आई एम गोइंग फॉर क्लस्टर। तो ये क्लस्टर का ऑप्शन है, मैंने क्लिक किया और ड्रैग करने का ट्राई किया तो ऑटोमेटिक एक ही बॉक्स आया। आई एम जस्ट ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो मैंने एक ड्रॉप किया, उससे मुझे ऑप्शंस दिखा है क्या क्या वेरिएबल्स चूज करने हैं। तो मेरे पास 2 ही वेरिएबल्स है अभी, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के भरोसे पे खेल रहा हूँ। दूसरा सेपल लेंथ, सेपल विड्थ को भी हाथ नहीं लगाया, 2 कॉलम के भरोसे पे खेलने का ट्राई कर रहा हूँ। नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। अभी ऑटोमेटिक है, अगर मैंने कुछ डाला नहीं तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट इट। मेरे पास ऑप्शन है कितने क्लस्टर्स उसको बताना है। मुझे मालूम है कि मुझे 3 चाहिए क्योंकि 3 टाइप के फ्लावर्स हैं, पर मैं उसको भी बताने नहीं वाला। लेट इट फिगर आउट कि उसको क्या करना है। तो उसको ऑप्शन दिया ही नहीं, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया, उसने फिगर आउट करके कलर कोड करके रखा। उसको सिर्फ नाम मालूम नहीं कि ये वर्जिनिका है, ये सोटोसा है, ये वर्सिकल है, बाकी उसने करके दिया। तो उतना क्लस्टरिंग एनालिसिस, के मींस क्लस्टरिंगचा अल्गोरिदम बॅकग्राऊंड मध्ये लागलाय। म्हणजे टॅब्ल्यू बाय डिफॉल्ट क्लस्टरिंग अल्गोरिदम जे लावतो, के मींस क्लस्टरिंगचा लावतो, ते फक्त सांगितलं नाही, पण त्यांनी लावून अल्गोरिदम लावून आन्सर काढून सगळं लिहून दिलं आणि सेकंदच आहे। म्हणजे जास्ती काही अजूनही कीबोर्डला हात नाही लावला, काहीच नाही, म्हणजे अजूनही आपण कीबोर्डला हात लावायच्या शिवायच करून राहिलो, तो टेन्शनच नाही। त्यांनी आंसर काढून दिलं। नाउ वी हैव टू लुक फॉर एफिशिएंसी कि ये इसने, उसको मालूम नहीं है दिस इज सेटोसा। उसने सिर्फ फिगर आउट किया है बेस्ड ऑन डेटा पॉइंट्स, जो अपने पास 2 डेटा पॉइंट्स थे उसके भरोसे पे उसने सेग्रीगेट करके रख दिया है कि ये फ्लावर्स ये क्लस्टर में, ये फ्लावर्स ये क्लस्टर में, ये 3 फ्लावर्स ने बता दिए।
बट इट वो उसको मालूम नहीं है कि वो कौन से टाइप के फ्लावर्स है. सो वी हैव टू डू दैट जॉब. उसको नाम देना अपना काम. तो 3 पार्ट में डिटरमाइन किया है कि क्लस्टर्स नाम का एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया. सो दिस इज AIML जनरेटेड क्लस्टर. क्लस्टर उसने खुद जनरेट किया है. के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगा के क्लस्टर जनरेट हुआ है. उसका उसने क्लस्टर बना के दिया. सो आई हैव टू यूज इट फॉर माय ओन. तो मुझे काम करना है. आई हैव टू ड्रैग दैट क्लस्टर टू द लेफ्ट. ऑटोमेटिक एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ है और उसको मुझे नाम देना पड़ेगा. उसने वो क्लस्टर जो किया उसको नाम दिया है. मैंने उसको उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. AIML क्लस्टर नाम दे दिया और छोड़ दिया. सो दैट इज अ क्लस्टर दैट Tableau has generated for us. और मैंने उसको जनरेट करके छोड़ दिया. अभी मेरा काम क्या है? I have to figure out efficiency. Has it actually printed all 150 points correctly? मेरे पास 150 पॉइंट्स है और मुझे वो 150 पॉइंट्स एग्जैक्टली उसने बताया कि कौन सा फ्लावर था. सेटोसा ही बताया, वर्जिनिका ही बताया. एफिशिएंसी टेस्ट करना और 150 पॉइंट्स में एफिशिएंसी टेस्ट करना बहुत इजी है. आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे ज्यादा चेंज करने की जरूरत भी नहीं. AIML क्लस्टर मैंने सेकंड शीट को नाम दिया है. पहला शीट एक्चुअल है डेटा सेट. ये मैंने जो जनरेट किया है उससे जनरेटेड मॉडल है. और अभी मुझे क्या करना है? मैंने जो क्लस्टर जनरेट किया है AML क्लस्टर, उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि क्लस्टर 1 कौन सा फ्लावर है, क्लस्टर 2 कौन सा फ्लावर है, क्लस्टर 3. नाम देना मेरा ही काम है. नाम उसको मालूम नहीं. उसने क्लस्टर बना के रख दिया है बट इट डजंट नो कि नाम क्या है. यू हैव टू टैग. आप अगर इमेज प्रोसेसिंग में खेल रहे हो तो आपको उसको इमेजेस को भी टैग करके रखना पड़ता है कि दिस इज अ कार, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग. आपको पहली बार तो भी टैग करके उसको बताना पड़ेगा. वो डॉग और कैट को आइडेंटिफाई तो कर लेता है लेकिन वो डॉग और कैट है ये बताने का काम अपने को करना पड़ता है. यहाँ पे भी वैसे ही है. यू विल हैव टू टेल उसको कौन सा है. तो मॉडिफाई क्लस्टर्स नाम का ऑप्शन है. एडिट ग्रुप बोलेंगे. क्लस्टर 1 का नाम तीन क्लस्टर्स फिगर आउट किए. 3 क्लस्टर्स को नाम दिए. तीनों क्लस्टर्स का नाम लेके हमने काम कर लिया. अभी अगर मैंने AIML क्लस्टर्स निकाल लिए और AIML क्लस्टर को कलर में डाला तो नाउ वी हैव फिगर्ड आउट कि वो क्लस्टर कौन से टाइप के. तो ये मेरा AIML में Tableau AIML जनरेटेड क्लस्टर है जो मुझे अभी सिर्फ चेक करना है कि एफिशिएंसी किसकी. तो चेक करना है तो आई हैव टू फिगर आउट कि एक्चुअल डेटा सेट जो पॉइंट था, जो फ्लावर था, वो सेम ही है. जैसे फॉर एग्जांपल सेटोसा का जो ये पॉइंट है मेरे AIML क्लस्टर में उसी को सेटोसा ही बुलाया है. आई हैव टू चेक दैट. ऐसे मुझे सारे 150 पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा. उसके लिए काम इजी है. और एक शीट बनाते हैं. नया शीट ये है. यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड बना रहे हैं. कैलकुलेटेड फील्ड मींस आई एम गोइंग टू डू सम कैलकुलेशन. कुछ तो भी कैलकुलेशन करके मैं उसको प्रोसेस करने वाला हूँ.
तो कैलकुलेटेड फील्ड का नाम कैलकुलेटेड 1 ही रखते हैं और काम सिंपल ही रखना है। मुझे चेक करना है ये जो AIML क्लस्टर जो मैंने क्रिएट किया है वो मेरे क्लास के साथ कंबाइन हो रहा है क्या। डबल इक्वल टू दे रहा हूं, दैट मींस इट इज गोइंग टू चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट। मैंने दो चीजें ली है, जो मेरा AML क्लस्टर का नाम था और जो मेरा एक्चुअल क्लास का नाम था फ्लावर का, उन दोनों को मैंने डबल इक्वल टू साइन के साथ इंटीग्रेट किया है। दैट मींस वी आर गोइंग टू जस्ट चेक कि वो बराबर है कि नहीं, इज द नेम ट्रू और नॉट, इन्हें दोनों सेम है कि नहीं। अभी काम कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन लेके डालेंगे ट्रू और फॉल्स और मेरा आरएस काउंट 9654। सो मेरा एफिशिएंसी अलग 96%, 96 फ्लावर्स को मैंने फॉल्स जनरेट किया है, 54 को मैंने ट्रू जनरेट किया है। अभी ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैंने मोस्ट प्रोबेबली स्पेसिंग मिस्टेक किया है। वर्जिनिका और वर्सिकलर ये सेम नाम रहने चाहिए, जैसे ओरिजिनल क्लस्टर में नाम है वैसे ही मुझे चाहिए। सेटोसा वर्सिकलर VERSICOLOR। ये आया। So I corrected the names, जो spelling mistakes मैंने किए थे, अगर करेक्ट किए तो नाउ दिस इज एक्चुअल पॉइंट्स। 6 फ्लावर्स मेरे डेटासेट में गलत आइडेंटिफाई, मेरे में AI मॉडल ने गलत आइडेंटिफाई किए आउट ऑफ 150, 150 ट्रू है और 6 गलत है। तो मेरा एफिशिएंसी बहुत कम है, जो एक्चुअली ठीक है, ये कम नहीं है बट स्टिल कम ही है, अबाउट 90% है एंड स्टिल कम ही। अगर मुझे और ग्राफ प्लॉट करने हैं, पेटल लेंथ पेटल विड्थ किया था, सेपल लेंथ सेपल विड्थ भी ट्राई कर सकते हैं। पूरा ही क्लस्टर है, इसमें और हार्ड है फिगर आउट करना कि क्या चल रहा है। आई कैन ड्रैग क्लास, इसमें तीनों कलर्स मिक्स्ड, so it is extremely hard in this case to figure out क्या है मुझे क्या करना है। अभी एक्सेल शीट्स वर्कशीट्स तो बना लिया, आई हैव टू डिस्प्ले दिस। अगर डिस्प्ले करना है तो आई हैव टू क्रिएट अ डैशबोर्ड, और वो डैशबोर्ड क्रिएट करना और इजी। तो नीचे ही वर्कशीट्स के बाजू में क्रिएट डैशबोर्ड का ऑप्शन है एंड आई कैन प्ले विद इट। जितने शीट्स बनाए वो सारे मैं खींच के ड्रॉप कर सकता हूँ। लोडिंग कर दिया लेजेंड को बीच में ला दिया। So this is how
आपका डैशबोर्ड वर्क करता है। यू हैव टू शो सम इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन दिखाना है आपको डिसाइड करना पड़ता है। एट द एंड द लेस यू शो द बेटर इट इज। ध्यान रखना पड़ता है, द लेस यू शो द बेटर इट इज। ज्यादा इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल वर्सेस एआई जनरेटेड क्लस्टर्स की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में जो है वो मेरा एक्चुअल डेटा सेट है, मेरा एक्चुअल फ्लावर्स है। राइट वाला मेरा एआई जनरेटेड क्लस्टर है। और ऊपर शीट 3 के नीचे जो लिखा है ट्रू फॉल्स, फॉल्स में 6 है। दैट मींस 6 ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको मैं करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मेरा एल्गोरिथम उसको करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही डैशबोर्ड पे दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग स्टफ। मैं अगर एक ही चूज करूं तो बाकी ग्राफ्स में भी वही चूज हो, ये भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटू सा फनल आइकन है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो मैंने जिस फ्लावर को लेफ्ट में चूज किया है उसी के बारे में की इंफॉर्मेशन राइट में दिख रहा है। सो आई एम बेसिकली प्लेइंग विद ऑल द इमेजेस। मुझे अगर सबको ही वैसा करना है, मैं सबको फनल क्रिएट कर सकता हूँ सबके लिए। अभी फॉल्स बोला तो फॉल्स बोला यानी मेरी जो गलत चीजें हैं वही दिख रही है। लेफ्ट में वो एक्चुअल फ्लावर है और राइट में मैंने उसको गलत आइडेंटिफाई किया है, वो भी दिख रहा है। तो आई एम एबल टू टेल कि भैया ओरिजिनल फ्लावर सेट डेटा सेट ये था और राइट में मेरे एआई मॉडल ने उसको गलत आइडेंटिफाई किया है, वो भी मैं एक ही डैशबोर्ड पे दिखा रहा हूँ। तो दोनों भी एक ही साथ चल रहा है। तो डैशबोर्ड एक्सट्रीमली पावरफुल, आपको संभाल के खेलना पड़ता है। डैशबोर्ड के बाद लास्ट पॉइंट स्टोरी। पावर पॉइंट खत्म होने आ गया है, पावर पॉइंट का जमाना खत्म होने आ गया है। नाउ वी हैव मूव टू स्टोरीज। स्टोरीज यानी लास्ट ऑप्शन, यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन व्हिच विल कीप ऑन मूविंग। तो आप जितने ऑप्शंस मैंने क्रिएट किए, एक डैशबोर्ड और 3-4 जो अलग अलग शीट्स, वो सारे आपका एक एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट विल कीप ऑन प्लेइंग, आपको जितने देर दिखाना है। आजकल जो बड़े प्रेजेंटेशंस है, स्पेशली स्टैटिस्टिशियंस, दे आर मूव टू टैब्लू। तो दे आर नो लॉन्गर प्लेइंग विद पावर पॉइंट, वो सारे टैब्लू या पावर बीआई के साथ ही खेल रहे हैं। प्रेजेंटेशन दिखाते टाइम कंट्रोल जो डैशबोर्ड का है वो पीपीटी नहीं दे पा रहा है, और यहाँ पे आपको एक्सेस है। पीपीटी के अंदर भी मैं डैशबोर्ड पे कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट क्लिक करके चला सकता हूँ एंड इट विल स्टिल वर्क, क्योंकि वो पीछे का इंफॉर्मेशन हम भी ले रहा है। तो एडवांटेज पावर पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। पावर पॉइंट स्टैटिक्स है, फिक्स चीज पकड़ के चल रहा है। यू कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग इट इन बिटवीन अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप बीच में प्रेजेंटेशन के बीच में ही चेंज कर सकते हो, वो एडवांटेज मिल रहा है आपको। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। टैब्लू एक्सट्रीमली पावरफुल तरीके से खेलता है और आपको इसमें से बाहर निकलना है। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेस एस्केप, बाकी सारे पॉइंट्स। सो एक्सट्रीमली इजी। दो केस स्टडीज, लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए काफी है। अजून काय करायचं? कोरिलेशन मैट्रिक्स। कोरिलेशन मैट्रिक्स काय है? y equal to c दिले थे, आज पर निकाला था, एफिशिएंसी निकाला। So we are trying to predict if y is dependent on x, if profit is dependent on sales or not. Correlation देखिए, are they correlated? चाय में कॉफी और शुगर कोरिलेटेड है कि ये देखने का ट्राई करें। कॉफी और चाय कोरिलेटेड है कि नहीं, देख रहे हैं। तो कोरिलेटेड है कि नहीं तो पता नहीं। एक को पी रहा हूँ, दूसरा पी रहा है, उसका बहुत कम रहता है। अगर कॉफी पी रहा है अभी तो इमीडिएटली चाय पीएंगे, वो चांस कम है। और जो बंदा कॉफी को स्टिक कर रहे हैं, जल्दी कॉफी को स्टिक करते हैं, चाय वाले चाय पी, चाय पत्ती और शुगर का कोरिलेशन वन, दोनों चाहिए। कॉफी में भी कॉफी और शुगर का कोरिलेशन वन, दोनों चाहिए। बहुत रेयर है ये भाई जो जितना शुगर करे, बट वो ले जैसे कि बहुत कम रहेंगे जो जितना शुगर ले। तो कोई कोरिलेशन ढूंढना है, बेचने गए, कॉफी का दाम बढ़ गया, कॉफी के कप का प्राइस बढ़ जाएगा, शुगर का दाम बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा, बिकॉज पॉसिबली एक्सट्रीमली हाई कोरिलेशन। याच्यासाठी नंबर ऑफ आवर्स ही प्लेगर पबजी केला नंबर ऑफ आवर्स ही प्लेगर पबजी वर्सेस इज ग्रेड इनवर्सली कोरिलेटेड। जितने घंटे इधर पबजी में डालेगा उधर ग्रेड नीचे जाएगा। एग्जैक्ट उल्टा भी है, जितने घंटे पढ़ेगा उतना ग्रेड ऊपर जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं। नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड ऑन नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, चैट जीपीटी, ग्रेड ऐसा
ऑप्शन ही नहीं है, so इनवर्सली कोरिलेटेड। तो कोरिलेशन का भी फंडा बहुत एक्सट्रीमली हाई है। इसके बाद अगर दिखाया तो प्रॉपर वो उसको साइड उसको पहले मैच पढ़ाना होता है, फिर वो उसके आगे का पार्ट जो कर रहे हैं, तो उसके आगे का यहाँ दिखा दो। और कोई क्वेश्चन है तो स्लाइड में दिखाया नहीं, एक बार स्लाइड दिखा तो दिखाई मैं तो क्या एक बार स्लाइड दिखाई इच्छा पूरी कर बोल। मैं एक्चुअली दोनों दिखा सकता हूँ, जो चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया मैं ऑफिशियली रन सर आपके इसमें थे चैट मैं इसमें एक दिखा दीजिए जनरेट कैसे करना है। हाँ कुछ भी अरे अच्छा टाइम लागेल ऍक्च्युली तुम्हाला लॉग इन करावं लागेल, कोणीही करू शकतो, तुम्हाला फक्त जीमेलचं लॉग इन लागतं, तुम्ही तिथे बसूनही करू शकता। chatgpt.com वर जाल तो तुम्हाला वगैरह लॉग इन करा विद गूगल और एनी आईडी एंड देन यू हैव टू ऑल यू टू डू स्टार्ट टाइपिंग। आपको क्या पूछना है आप पूछने आंसर देगा। हाँ लिटरली कुछ भी चलेगा। अगर आप चैट जीपीटी यानी पहले ओरिजिनल वाला वर्जन यूज करो तो 2021 तक के शायद उसका डेटा सेट था, तो वहां तक के कोई भी क्वेश्चन रेलेवेंट होगा तो यू विल आंसर। अब कुछ भी आंसर करता है लिटरली कुछ भी आंसर देगा। अच्छा प्रेजेंटेशन में जो मैंने अच्छा ठीक है दिखा देता हूँ, यहाँ तक के आगे हाउ डू यू चूज विच चार्ट यू आर सपोज टू शो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पसंद आ रहा है लाइन ग्राफ, इसलिए मैं लाइन ग्राफ नहीं दिखा सकता। इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस है कौन सा ग्राफ कब दिखाना है, ये भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अलग अलग ग्राफ्स है, हमने अभी ये स्कैटर ग्राफ देखा, जो पॉइंट्स थे पूरे स्कैटर्ड थे, उस स्कैटर्ड पॉइंट्स से बिकॉज़ वी वर ओनली प्लेइंग विद रिस्पेक्ट टू 1 x एंड 1 y, हम पेटल लेंथ वर्सेस पेटल विड्थ खेले या फिर सेल्स वर्सेस प्रॉफिट खेले, वी आर वेरी डेटा डिफरेंट। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कैसे टाइप का ग्राफ है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इट इज नॉट इजी, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स है चार, व्हाट वुड यू लाइक टू शो, रिलेशनशिप दिखाना है, कंपैरिजन चार्ट दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, कंपोजिशन। बेस्ड ऑन दिस आपको चार्ट चूज करना है। अच्छा मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं भूल गया दिखाना, वो दिखा देता हूँ। हम लोग अभी तक ये खेले हैं, ग्राफ्स कहाँ है तो दिखे ही नहीं। ग्राफ्स यहाँ पे शो मी में बाजू में ये शो मी का ऑप्शन अभी सारा हिडन है, बिकॉज हर एक ग्राफ को कोई ना कोई चीज लगती है। एक्चुअली मैं डैशबोर्ड में हूँ इसलिए हिडन। ये राइट, ये सारे ग्राफ्स हाइलाइटेड जो है दे आर एक्टिव, दैट मींस उससे रिलेटेड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसलिए वो एक्टिव है। तो आपको अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कर सकते हैं। आई कैन चेंज एनी ग्राफ, क्लिक किया ग्राफ चेंज, कौन से भी ग्राफ से कौन से भी ग्राफ पे जंप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाए चाहिए पाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, गोल गोल ये वो स्कैटर, ये इंटरेस्टिंग है। आजकल इसका बहुत जमाना है। वर्ड क्लाउड्स बोर्ड बनाते हैं गोल गोल। न्यूज चैनल वाले ऊपर नीचे वर्ड्स बना बना के थक गए, हाईलाइट करते हैं। चाहे आप मोस्ट की वेबसाइट पे ऐसे ही रहेगा है कि बट यू कैन यूज दिस टू। काफी एक्सटेंसिव जो यूज होता है वो ये बीच का हिस्टोग्राम, लीनियर रिग्रेशन के मैंने आई थिंक वो सब बताया था। अजम्पशंस रहते हैं बिफोर यू कैन अप्लाई एन लीनियर रिग्रेशन मॉडल, यू हैव टू अज्यूम सम थिंग्स। नॉर्मलाइजेशन उसमें एक अजम्पशन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक वो भी है। उसके लिए ये चार्ट है, वो अभी दिख रहा नहीं है एक्चुअली, और देख सकते हैं। तो ये जो सारे ग्राफ है अभी इफ आई होवर ओवर देम इट विल टेल यू उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। एग्जाम क्वेश्चन है एक्चुअली, जो टैबलू डेस्कटॉप का जो एग्जाम है इट विल आस्क यू फॉर दिस क्वेश्चंस। मुझे ये ग्राफ बनाना है, टेल मी व्हाट आर माय रिक्वायरमेंट्स। तो आपको यही से पढ़ के यूज्ड टू हो जाते हैं हम लोग, बट आपको मालूम रहना चाहिए। तो 24 ग्राफ्स है, वो 24 ग्राफ्स के सारे रिक्वायरमेंट्स आपको मालूम रहना चाहिए। तो एग्जाम एकदम ऑड है,
सेल्स क्लिक करेंगे, अगर सिर्फ सेल्स क्लिक किया है तो दो ग्राफ्स एक्टिवेट हो गए। पहला एक सादा ग्राफ है जो ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा हिस्टोग्राम, एंड इट इज टेलिंग बेसिक वो कैसे डिवाइड है, बिन्स में डिवाइड करके रखा है डेटा को। नंबर ऑफ बिन्स का चॉइस उसने दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही होंगे। मोस्ट प्रोबब्ली एक पॉइंट यहाँ पे जो 21000 वाला सेल्स का एक आइटम था, एक ही आइटम था, वो यहाँ नहीं दिया, वो इसीलिए उसका ग्राफ नहीं दिख रहा है। तो बाकी सारे इंसिडेंटली कंडेंस है, तो 21000 को इंक्लूड करना पड़ रहा है। तो उसने बिल्स का सेट, ये बिल्स काफी काम में आते हैं एरर्स को रिजॉल्व करने में, या फिर आउटलायर्स को फिगर आउट करने के लिए भी आपको काम में आएंगे। इसके ऊपर ही ये भी एक बॉक्स एंड डिस्कस बॉट, मैंने एक्चुअली क्लिक किया है पर वो छोटू सा ही आया, बिकॉज उसमें भी प्रॉब्लम वही है, 21000 का इतना बड़ा एक सेल आइटम है कि वो बहुत नीचे कहीं तो भी अनइमेजिनरी स्पेस में ऊपर नीचे कहीं तो खड़ा है, और वो एक पॉइंट उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरे चीज, पूरे ग्राफ, तो इसलिए आपको दिखना नहीं है। विच टाइप ऑफ ग्राफ रूल्स है उसके, हिस्टोग्राम चूज करना है, कौन सा चूज करना है। विजुअल मैपिंग एक्चुअली चार चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप ग्राफ चूज करते हो। तो कंपैरिजन करना है तो यू नीड अ ग्राफ, बार बार स्ट्रक्चरल या फिर ज्योग्राफिकल रिलेटेड चीजें हैं तो ज्योग्राफिकल मैप्स बनाने पड़ेंगे। टेम्पोरल है जहां पे लाइन ग्राफ होते हैं, कंपेयर टू मेजर्स हमने जब भी किया स्कैटर प्लॉट एक्स वर्सेस वाई, हमने किया सेल्स वर्सेस प्रॉफिट भी करा, तो स्कैटर प्लॉट का प्रिसाइज नंबर चाहिए तो टेक्स्ट टेबल्स, आपको टेबल्स के साथ ही खेलना पड़ेगा। चार टाइप जो 24 मैंने बोले वही उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, एक उसका डिस्क्रिप्शन है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हीट मैप, हाईलाइट टेबल, उनका सिंपल एग्जांपल वही है। कैसे ओवर टाइम लेना है, ट्रेंड बनाना है, वो भी कर सकते हैं। स्टैटिक है तो पाई ग्राफ, पाई चार्ट भी लगा सकते हैं, वाटरफॉल चार्ट आजकल बहुत फेमस है, वो यूज करते हैं। ओवर टाइम स्टैक ग्राफ करते हैं। कोविड का सबसे ज्यादा यूज केस ये वाला था, यहाँ पे आप डेथ्स भी दिखा रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट भी दिखा रहे थे, यहाँ पे कंट्रीज भी दिखा रहे थे, सब विद रिलेशन टू दिस ग्राफ। ये हमने अभी किया, ये एग्जैक्ट वही ग्राफ, सेल्स वर्सेस प्रॉफिट जो देख रहे थे, और वो हिस्टोग्राम वो भी हमने अभी, ट्री मैप, गैंट चार्ट, बुलेट चार्ट, स्कैटर प्लॉट भी हमने देखा। अलग अलग ऑप्शंस है, 2D है, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डायमेंशंस अनलिमिटेड, आपके ऊपर। ज्योग्राफिकल डेटा होगा तो उसी सेल्स का है, वो उसी इसका है, वही एग्जांपल का है, सैंपल सपोज जो लिया है उसी का ग्राफ बना के मैंने बनाया है। तो कुछ भी नहीं, मैं स्टेट वाइज प्रॉफिट देख रहा हूँ, दैट्स इट। मैंने उसको कलर कोड करके रखा है, प्रॉफिट बाय स्टेट, जिसका ज्यादा प्रॉफिट वो डिजाइन के एग्जाम से है, 76000 सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, डार्केस्ट ब्लू मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला देखना है, मोस्ट प्रोबेबली न्यूयॉर्क में है। हां, न्यूयॉर्क है और कैलिफोर्निया है, दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट ड्राइव कर रही है, बाकी सारी कम, बाकी सारे स्टेट्स में कुछ ज्यादा कुछ खास हो रहा नहीं। कुछ तो भी नहीं दिख रहा है, वो देखने का काम हम कर रहे हैं पिक्चर के थ्रू, बस वही है। डैशबोर्ड मैं अभी देखा था, डैशबोर्ड इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन नीडेड। अभी वो कैसे बनाते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, आंसर्स अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, फॉलो द फ्लो एंड इनवाइट्स इंटरैक्टिविटी। ये नीचे का, ये अभी राइट साइड में डैशबोर्ड जो बनाया था, कंडेंस्ड है, सारा पिक्चर बताता है। मेक स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ कलर, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हम लोग सब विजुअली खेल रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस मानो किसी को है। यूएस में 1 in 7 men are colorblind, men, men 1 in 7 person men are colorblind, so you have to be extremely cautious in what you're doing somewhere else मुश्किल। तो डैशबोर्ड बनाने टाइम आपको उनका अलग से ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली उनके लिए डैशबोर्ड बनते हैं। तो आप जो कलर कॉम्बिनेशन यूज करोगे वो ग्रेडियंट्स का रहता है, एक कलर चूज कर लिया, समझो ब्लू चूज कर लिया तो ग्रेडियंट ऑफ ब्लू भी रखना पड़ता है ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ कलर्स। पीपीटी के टाइम पे आपको सोचना ही पड़ेगा कि आप जो पीपीटी बना रहे हो पावर पॉइंट, उसके लिए भी आपको कलर्स सोचने पड़ते हैं। दिस अगेन, ये क्या हुआ, क्या होगा हमारे, एक्चुअली हम कोई वेब पेज कैसे पढ़ते हैं उसका हिट मैप,
हमारी आंखें कैसे मूव हो रही है वो वेब पेज पे उसका हिट मैप। हमारी आंखें मैक्सिमम चीजें ढूंढती नहीं जाएगा। लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे टॉप से मैं चालू करता हूँ, थोड़ा राइट जाता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ, थोड़ा राइट जाता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ, फिर ऐसे ही मेरी आंखें इधर घूमना चालू हो गई। अब मैं वही पूरा पेज पढ़ता ही हूँ। और वो एक्चुअल हिट मैप है, न्यूयॉर्क टाइम्स का है, दूसरा भी ऐसे कुछ भी बड़े सा है। ये एक्चुअल एनालिसिस हुआ है। हमारी आंखें कोई वेब पेज को कैसे छानती है उसका वो एग्जांपल है। और वो हिट मैप है, ये भी टैब्लू में बना है। तो यू कैन कलर कोड, है ना। तो दैट टेल्स यू कि आपका पावर पॉइंट अगर आप बना रहे हो या फिर मैंने जो डैशबोर्ड्स बनाए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ रखनी है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर और थोड़ा सा सेंटर, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी पीपीटी का, कोई भी डैशबोर्ड का। तो योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज टू गो देयर। आपको वो देगा वो रेड वाला क्या इंडिकेट कर रहा है? आपकी आंखें जब कैसे रीड कर रही है वेब पेज को, तो कहाँ पे थी वो बता रहा है। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ पे थी आपकी आंखें, तो जो हाईलाइटेड पोर्शंस है वहां पे आपकी आंखें सबसे ज्यादा बार गई। तो आपने जो स्कैन किया पेज को उतने ही एरिया में स्कैन किया, बाकी पेज को छोड़ ही दिया। तो यू थॉट इट वाज नॉट रेलेवेंट या फिर उतना पढ़ना बोर हो गया, छोड़ो आगे चलते हैं। वो सोचना है। तो न्यूज चैनल्स वाले भी सबसे ज्यादा बिग नंबर बैन बोलते हैं उसका, एक्चुअली बिग नंबर्स। सो सबसे ज्यादा नंबर्स, बड़े नंबर्स इतने ही एरिया में रहते हैं। आप कौन सा भी न्यूज़पेपर खोलो, इसी एरिया में सबसे बड़े नंबर्स, और नंबर्स दिमाग में जल्दी जाते हैं, इसलिए नंबर्स पहले रहते हैं। 10 लाख कोविड के पेशेंट मर गए बोलेंगे, तो 10 लाख इंपॉर्टेंट है तो पहले पूरा 10 लाख लिखेंगे। 10 लाख भी लिख सकते थे पर पूरा नंबर हाईलाइट करेंगे। 10 लाख, 1 करोड़ में तो पूरा 1 करोड़ का 0 चलते रहेगा, बट दे विल कीप इट लाइक दैट बिकॉज़ वो सबसे बड़ा हाईलाइट है और सबसे ज्यादा दिमाग में जल्दी घुसता है। तो अपने लिए वो पॉइंट वहां पे, आपको डैशबोर्ड्स कैसे बनाने वो भी पढ़ना पड़ता है, इतना एक्चुअली नहीं है। वंस यू चूज, आपको चॉइस रखना पड़ेगा। कलर कॉम्बिनेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एम्फसाइज एरियाज लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, टॉप और मिडल, आपको उसी पे फोकस करना है। एनालिसिस मेरे डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड शुड बी क्लीन एंड इजी टू रीड। फिल्टर्स एट द टॉप, मैंने जो फिल्टर्स यूज किए, हमने दो ही फिल्टर यूज किए थे, फॉल्स और ट्रू का, और दूसरा मैंने सिर्फ यस और नो का था। वो बीच में रखे थे लेकिन आपको टॉप पे रखने हैं। जनरली फिल्टर्स शुड बी ऑलवेज ऑन द टॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी एट द टॉप एंड सेंटर। स्टार्ट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिटेल्स एंड गो डाउनवर्ड्स, क्योंकि नीचे की चीजें ज्यादा लोग पढ़ते नहीं। और नॉट मोर देन 4 and 5 or 6, मैंने 3 ही यूज की थी, 4 भी बहुत है। यू कैन नॉट क्लस्टर, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। 5 सेकंड का टेस्ट रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज एट द टॉप, पेरेंट्स का नियर का यूज, अवॉइड मल्टीपल कलर स्कीम्स, यूज 5 और फेवर चार्ट्स। ये कलर स्कीम्स ही रहते हैं, ये कलर ब्लाइंड के हिसाब से ही प्लान किया जाता है। तो रेड आरजीबी हम लोग पिक्चर के हिसाब से देखते हैं, इमेज अगर देख रहे हैं तो तीन ही कलर का कॉम्बिनेशन है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे भी खेलेंगे। एक कलर आपने चूज किया है तो उसी का कोई ग्रेडियंट आपको चूज करना है, यू कैन नॉट गो विद मल्टीपल ऑप्शंस। प्लस अगर समझो आपने सेल्स का लाल कलर चूज किया है, इन योर एंटायर पीपीटी और इन योर एंटायर डैशबोर्ड जहां तक आप जा रहे हो, रेड शुड बी ओनली फॉर व्हाट यू हैव चोजन। अगर आपने प्रॉफिट चूज किया है तो एंड तक के प्रॉफिट रेड के लिए रहेगा। सो यू हैव टू कीप इट इन सिंक, सारे सब सेम साथ चलने चाहिए। तो अगर 50 स्लाइड का भी पीपीटी है तो एंड तक के लाल विल बी ओनली फॉर प्रॉफिट, यू कैन नॉट चेंज इट। वो आपको रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। वन से पहले यही बताता हूं, कंफ्यूजन एलिमिनेट करता है, आइडेंटिफाई कलर्स थ्रू आउट द वर्क। जितने हॉट कलर्स है, स्पेशली रेड एंड येलो, बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग देम, एक्चुअली अवॉइड यूजिंग देम। अगर बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो ही ऐसे ब्राइट इन्हें रेड हॉट कलर्स यूज करना है, अदरवाइज अवॉइड। आपका इंफॉर्मेशन नॉर्मल है, आइसक्रीम कितने बेचे गए, क्या बेचे गए, उसमें दिल को धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए, जरूरत नहीं है हार्ट अटैक आने की, तो उधर वो ब्राइट कलर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, यूज सिंपल कलर्स। आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कलर्स यूज करने की जरूरत नहीं, वार्म कलर स्पेशली राइट साइड का जो सीक्वेंस है रेड और येलो का, प्रेफर टू बी अवॉइडेड। मेडिकल के लिए ज्यादा यूज करते हैं, बाकी कभी यूज नहीं करते। टाइटल इंपॉर्टेंट है, एंटर पे क्या लिखना है, अच्छा टाइटल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक टाइटल में ही आ जाती है, तो बाकी का पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वो टाइटल ही मेरे को सारी चीजें बता देता है। टाइटल और टूल टिप तो मैंने उस छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बताया था, उतना ही। ये टूल टिप है जो ले रहा है, छोटा सा ऑटोमेटिक है।
ये स्क्वायर बॉक्स बना है, ऑटोमेटिकली मूव करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। वो टूल टिप भी आपको जनरेट करना है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है कि कैसे बनाना है, उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट के लिए रखें, एक नहीं, ये वाइट स्पेस, ये आपको बहुत केयरफुली यूज करना है। डोंट बी अफ्रेड टू यूज वाइट स्पेस, है ना। apple.com पे जाओगे तो 95% पेज वाइट है। apple.com आप भी जाकर देख सकते हो, दे प्ले वेरी केयरफुल, आपको बहुत केयरफुली कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। साइकोलॉजी मैटर्स यहाँ पे है, बेचना कैसा वो भी आना चाहिए चीजों को, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द वाइट स्पेस। आपको सोचना है वाइट स्पेस भी कहाँ यूज करना है, इतना इजी नहीं है वाइट स्पेस के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पिक्चर से लेके चिपका दिए वो काम कर नहीं। कुछ बुक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो डैशबोर्ड्स के बारे में, कुछ विजुअलाइजेशन ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं जिन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं, सम ऑफ देम मैंने कहाँ से कॉपी किया वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी उनको बताना होता है, उनके सिवाय ये प्रेजेंटेशन अधूरा है। मोक्ष मिल गया, हाँ, मोक्ष मिल गया। हाँ, ये बंदा आई थिंक मेरा मैक्सिमम प्रिंटेड ये बंदे की तरफ से मुझे इसका ब्लॉग स्पॉट जो है वो ऑलरेडी टेकन ओवर है, यानी रिमूव हो गया, तो आई कुडंट फाइंड द रेलेवेंट कंटेंट अभी, बट मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैंने इससे ली। लगभग मैंने सारे पिक्चर्स के नीचे एक रेफरेंस डाला है कि मैंने कहाँ से उठाया, पर अगर कुछ मिला नहीं है तो मोस्ट प्रोबब्ली इसके वेबसाइट से है, तो पूरा थैंक यू इसको ही है। वो छोड़ना नहीं बस। हमारा थैंक यू आपको भी, उनको बाकी लगभग सारी है, आई थिंक सारे प्रेजेंटेशन, जैसे यहाँ नीचे मैंने लिंक दिया है कि मैंने वो फोटो कहाँ से लिया, बट कुछ जगह पे मुझे अभी याद नहीं है या फिर मैं भूल गया हूँ, तो मुझे लगता है कि एक ही ऑथर है जिससे मैंने ज्यादा उठाया है, ये लास्ट वाला रोमाना आर्थर, ऑल क्रेडिट गोस टू हर, पता नहीं कौन। और कोई क्वेश्चन हो मतलब ये स्लाइड चैट जीपीटी को पूछोगे तो बता देगा ना अपनी कहां नहीं, मैं इसे तो बोल रहा हूँ, मेरे पास दो स्लाइड्स हैं, एक जो मेरे स्टूडेंट ने बना के दिया 1 मिनट में, और एक ये जिसमें मैंने कल रात को 2.5 घंटे बैठा। हाँ, तो इसको दिमाग नहीं लगाया, मैंने दिमाग लगा के इनकी बात हम पे आके रह जाती है कि कुछ अगर इंटेंस चाहिए तो खुद का दिमाग को लगाना पड़ेगा। वो बेसिक You take